सचिव महोदय से निवेदन, कृपया डॉक्टर रविंद्र कुमार पाठक जी हमारे बीच आपको पौधा प्रदान कर हम आज के इस अवसर पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हो गया सर, आपको कोई नहीं? अच्छा, किनसे करा दें? श्री वीरेंद्र कुमार जी से निवेदन, हमारे बीच माननीय विधायक श्री लंबोदर महतो जी हैं, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। श्री प्रोफेसर उदय शंकर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं श्री सोनोत सोरेन रंजीत जी से निवेदन करती हूँ, रंजीत सर से। सर आप कृपया पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें प्रोफेसर उदय शंकर सर का। हमारा भारत देश राज्यों का एक संघ है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। हम उनका पालन करते हुए अपने उद्देश्यों को हम हासिल करेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आइए इसी उद्देश्य के साथ ईश्वर से कामना करते हुए हम एक दीप प्रज्वलित करें। मैं मंचासीन माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय एवं मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगणों से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया मंच के नीचे दीप प्रज्वलित कर आज के इस सम्मेलन का, संघ राज्य संबंधों पर आधारित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, सदस्य विधानसभा, श्री स्टीफन बरांडी जी, सदस्य विधानसभा, डॉक्टर ए लक्ष्मीनाथ सर, प्रोफेसर डॉक्टर के शौराकुला सर, प्रभारी सचिव महोदय एवं मंच के नीचे हमारे जो सम्मानित अतिथिगण हैं, दीप प्रज्वलित कर आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। संघ राज्य संबंधों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। झारखंड विधानसभा की ओर से झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आज का ये आयोजन संघ और राज्य के बीच का संबंध, पूरे निकाय और उसके भागों के बीच का संबंध है और ये संबंध स्वस्थ रहे, ये बरकरार रहे, इसी उद्देश्य के साथ ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं जो हमारे मार्ग को रोशन करेगा। एक ऐसा दीप जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा, हमारे मार्ग को रोशनी प्रदान करेगा और हम ऐसे राह में चलते चले जाएंगे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम हो पाएंगे। ईश्वर से यही कामना है, ईश्वर से यही दुआ है। दीप प्रज्वलन के साथ तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हों। दीप प्रज्वलन के साथ संघ राज्य संबंधों पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया गया हमारे माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय के द्वारा एवं मंचासीन हमारे सभी गणमान्य सम्मानित अतिथियों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के विधिवत शुभारंभ के लिए। पुनः मंच पर आप सभी का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस अवसर पर जब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए, स्वागत भाषण हेतु और कार्यक्रम के आधार पर व्याख्यान की प्रस्तुति देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो महोदय। आप आए और स्वागत संबोधन पर कार्यक्रम पर रोशनी डालें।
राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभ अवसर पर हमारे मंच में उपस्थित हैं हमारे झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ विधायक प्रोफेसर स्टेफन मरांडी जी, वरिष्ठ विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के कुलपति प्रोफेसर केशवा राव बेराकुला जी, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के श्री चक्षु राय जी, रांची प्रोफेसर ए लक्ष्मीनाथ जी, प्रोफेसर दिलीप उके जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर अनुराग दीप जी, डॉक्टर नीरज कुमार जी, प्रोफेसर उदय शंकर जी, प्रोफेसर शिव कुमार जी, डॉक्टर के श्यामल जी, प्रोफेसर कृष्ण महाजन जी, प्रोफेसर जोगेश प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार पाठक जी, इस सम्मेलन के लिए देश के अलग अलग हिस्सा से, अलग अलग जगहों से आए हुए विधि विशेषज्ञगण, विधानसभा के प्रभारी सचिव, सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रेस मीडिया के साथी और इस सम्मेलन में पहुंचे हमारे प्यारे बच्चे, मैं इस सम्मेलन में सभा सचिवालय के ओर से आप सबों को तहे दिल धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथी, आप सबों को मेरे तरफ से जोहार। वेलकम टू द स्टेट ऑफ झारखंड, द स्टेट ऑफ झारखंड, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट और जंगल, a beautiful landscape of the green fields and dense forest welcomes you with folded hands. My humble greeting to one and all gathered here to make the National Conference on Center-State Relations a successful academic event. Before going into the subject of the National Conference, I would like to speak about the state of Jharkhand. The land of Jharkhand is geologically one of the oldest land masses of the earth. A paper recently published in the proceedings of the National Academy of Science revealed that the Singhbum Craton was formed 3,100 million years ago. It is the first landmass that come out of water in the world. This is the land of one of the oldest tribes of the world, having their lineage of Harappan civilization or evergreen older habitation of the mankind. This is the land of the first iron smelters of the world who helped the Mauryan and Guptas to become the most glorious empires of their times. This is the land of Baba Tilka Maji, Sidho Kanu, Phulo Jhano, Chand Bhairav, Bhagwan Birsa Munda, Sheikh Bhikari, Nilambar Pitambar, Amar Sahid, Thakur Biswanath, Sahdev, Jaipal Singh, Mundaji, and Shibu Soren. After probably the longest and most democratic separate state agitation, state of Jharkhand was carved out of Bihar state on 15th November 2000, and 22 years have passed since then, and as the part of the celebration of our 3 days Foundation Day ceremony, we have organized this national conference. With this introduction about the state of Jharkhand, I will start my today's keynote speech with the words of Dr. B.R. Ambedkar, Chairman, Drafting Committee of the Constitution of India. I quote, "Through the country and the people may be divided into different state and governance is distributed between the center and states. For the convenience of administration, the country is one integral whole. Its people, a single people living under a single
imperium derived from a single source, unquote. As said by the Dr. Bhimrao Ambedkar, though for the administrative convenience, the governance is distributed between the center and state together, both the institutions shall be strive hard to achieve the welfare state. On 26th January 2022, we celebrated the Republic Day, commemorate 75 years of the progressive India and glorious history of the people, culture and achievements. 76 years in the life of the nation, such as India, are perhaps inadequate to judge the strength of the constitutional institution and systems of governance. Yet, political leadership at the central, state, and local levels organized governance in the spirit of the Constitution by promoting harmonious relations between the center and the state. A healthy center-state relation is critical for the stability, security, and economic development of the country. The turn of events, time of the country's partition preceding the birth of the Indian impelled the Constitution Assembly to opt for a federalism which is slightly titled towards the center, but state being the impart instrument of the progress and transition has also been given powers in the Constitution. The operate and the concurrent field is created by giving primacy to the laws passed by the Parliament of our state, laws keeping residency powers of the center and imposition of emergency rule by the center in extreme situation were incorporated as essential elements of the Constitution. The federal system of the governance has been discussed at the length in various articles of the Constitution outlining the determining the relationship between central and state governments in the last 7 decades since the Constitution has been come into the force. 105 amendments have taken place, with several of these having direct bearing the center-state relationship. Time to time, the center-state relations were put to a test and independent India saw changing eras of the federalism from cooperative to competitive. There were widespread demands of the providing greater autonomy for the state in their functioning, wanting to create their own niche in their respective regions. Many political historians and the constitutional experts like RCS Sarkar observed that over-centralizations of the powers in the hands of the union government was one of the major reasons behind rising conflict between the center and the state. Various commissions such as the Administrative Reforms Commission, Sarkaria Commission, Panchi Commission, etc. were constituted to provide recommendation for building harmonious center-state relation. The federal setup of India took new shape when country had to confront the issues of the terrorism, security of nation, economic development, international relation, demands of the growing population, etc. The state were expected to function on a scale larger than before, though their access to tax powers and borrowing remained limited. Center's power of the intervention have been circumscribed to the judicial pronouncement in several areas, such as impositions of President's rule, the dictum of basic structure of the Constitution, propounded by the Supreme Court in the celebrated Kesavanand Bharati case, also tied the hands of the center in important ways. The effect inter alia was that while the state felt handicapped in the pursuing development programs of their own for lack of adequate funds, the center found itself
hamstrung even when they were serious backdown in law and order in some areas. This dynamic in the center-state relation in the Indian federal setup always demand for another look at the entire government of the center-state relation. Relation between the center and the states range over a wide area. They cover but are not confined to the entire field of the administration and in fact overstep into that of the politics. The starting point of my examination of center-state relation start to the study of the interplay of the administration and politics and is not easy to define. The lawyers and constitutional pundits debate at length whether India is a unitary state or a federation or a quasi-federation. Whatever may be the characterization considering the size of our country and its derived population, it is for sure that governments cannot be effectively carried out unless the local initiative was blended with the central support. The original intent of the constitution makers is to have a delicate balance of powers between the center and state, but not place neither the state under the center or nor center under the state. I believe there is a requirement of the promoting the constitutional ideology in the right way and needs to reiterate the innate of the constitution makes time and again we are observing its breakdown practically every day. This national conference has been designed to look at the constitutional mechanism of the center-state relation. They have evolved and also to derive recommendation for the solution and improving the working of our federal structure in the light of economic and social developments and to bring about good governance for the benefit of the society and poor people. No matter what the constitutional provision, Dr. Rajendra Prasad warned, the welfare of the country will depend on how it is administered. The aspect of the good governance needs to highlight it. There is a need for the addressing the appropriate role which is required to the played by the center, the state and the panchayats and municipality areas, the third tier of our constitutional structure and how it can be ensured that there is a synergy amongst them. This is daunting task of hoping that the deliberation of various aspects of the center-state relation to be delivered by the academician and the constitutional scholars from the various parts of the country who are with us will take the task forward and educate the participants and will bring fruitful and meaningful interaction upon the topics of the national conference. With these words, I have with rest and request Professor Dr. Kesav Rao Bharakula, the Vice Chancellor, National University of Study and Research in Law, Ranchi, to take the lead in carrying the proceedings of the conference. Jai Hind. Thank you. Jai Jharkhand. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर रोशनी डालने के लिए। हमारे बीच माननीय सदस्य विधानसभा श्री लंबोदर महतो जी हैं। सर, मैं आपसे सादर आग्रह करती हूँ, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। मंच पर स्वागत है सर। और अब जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, अब हम टेक्निकल सेशन शुरू करेंगे और इसके लिए मैं सादर निवेदन करती हूँ मंच संचालन के लिए श्री केशवराव वराकुला जी, माननीय कुलपति महोदय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची। Honorable Speaker Rabindranath Mahto ji, other leaders who are shaping the destiny of Jharkhand on the dais,
experts in the subject of constitutional law that have arrived here and assembled here. One by one, I'll call at a later stage, but all of them, very good morning. Distinguished invitees, co-teachers from different law institutions, students assembled here, electronic and press media, officials of Lok Sabha, Vidhan Sabha. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I extend a warm welcome to all of you to this conference on center-state relations. Two things I must bring to your notice at the very beginning. Very rare the legislative authorities think of academicians, and much rare the academicians associate themselves with the legislators. This is the first of its kind when the Legislative Assembly, headed by Honorable Speaker, felt it is proper that there must be academic discussion on a topic which is perennial importance. It is not a subject that became important before India's independence or before the Constitution of India was brought into force. It is a subject that is important from the day August 15th, 1947 onwards till today. There is a beautiful discussion going on, and Honorable Speaker has referred to it in his speech. Is India a unitary state, or is India a federation, or is India a quasi-federation, or is India something else? Depending upon that concept, how we perceive it depends the relations between center and state. The second important aspect which I wish to the audience to kindly reflect upon is father and son joining together in organizing a family event is quite natural. But a father and son, when they are not individuals but they are institutions, joining together and organizing a conference is rarest of the rare. And I am very happy to inform you that our father, the Legislative Assembly of the state of Jharkhand, and with a proud son, the National University of Study and Research in Law, are joining hands for the first time, probably in the history of India, to organize a seminar which is not connected with the body polity, but connected with the theoretical aspects of the center-state relations. When the idea came into our mind, we thought, of all, let us have a look into the Constituent Assembly debates when the subject of center-state relations was taken up, whether all the aspects that were discussed have been incorporated in the Constitution of India, and whether the provisions are being implemented in both letter and spirit. Well, with this little objective, simple three objectives, we started embarking on this wonderful adventure, which is culminating today. And I'm really grateful to all the experts that have come from all parts of India, from west, from south, from north, and from east. A person is going to join us, a resource person is going to join us a few hours from now. So virtually it is a representation of the entire India, and they will be talking on different topics which are part and parcel of the rubric of center-state relations. Because this is being organized by the Jharkhand State Assembly,
we are joining them. Along with us, PRS is also joining us, and JSTV is also joining us. We are joining our efforts together, our endeavors together to organize this event. Uh, with this, I have only one request, and pardon me for making this request because I think this request need not be made because we are all academicians. We know that the time is the essence. Section 55 of Indian Contract Act lays down the time is the essence of the contract. And every speaker that has come here to speak have undoubtedly entered into an implied contract. And when the time is the essence, let us see that we stick to the time limit. I understand as academicians, we are naturally inclined to speak. But my request is kindly let us curb that natural anxiety, natural what is it, sensitivity, and let us see that we stick to the timetable. I mean, the scheduled time that is given. And with these few words, I once again welcome all of you to this wonderful, first of its kind conference being organized in India in general and in Jharkhand in particular. I welcome. Let us start listening. I'm very happy that the opening batsman, in fact, we are 11 speakers. Therefore, it's a football team because now the football season or cricket World Cup, T20 World Cup has just now been completed. There are also 11 players and we have 11 speakers. The opening batsman is always supposed to be the most experienced batsman. And who else could be a very experienced batsman? He was the chancellor of a national university, the only academician that has ever become a chancellor of a national university, pro-chancellor of university in Patna, founder, vice chancellor of Chanakya National University, Patna. He worked in Nagpur University, he worked in Andhra University, and how many books have been written by him? I don't know. But one thing I know, under his guidance, more than 50 people got PhD awarded. And he is the, what I call, the Bhishma Pitamaha of the legal fraternity today, the academic fraternity today, and he is by my side. Let's all welcome Professor A. Lakshminath with a round of applause. And any discussion on center-state relations will have to start with the discussion with money. पैसा में है परमात्मा, पैसा नहीं है तो परमात्मा भी हमको नहीं सुनेगा. And about the fiscal federalism, we are going to listen to Professor A. Lakshminath. Sir, my time says 5 to 12. Please, sir. All yours. Let's welcome him. Thank you, Vice Chancellor, for the very generous words. And at the same time, you have also given me a caution or warning that I must not exceed the limit of 15 minutes. 16th minute means I think I am just by your side only. I don't know what will happen. Sir, permit me to intervene. This time will be directed. I only said one thing, sir. If you exceed 16 beyond 15 minutes, the entire bill has to be borne by yourself. That's the only caution, sir. Please go ahead. Fiscal. Again. Yeah, again fiscal. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी और अन्य महानुभाव, सम्माननीय विधायक और सम्माननीय कुलपति जी, और विधायक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ ये विधायक ही नहीं है, ये विधाता भी है. विधाता है, भाग्य विधाता. झारखंड के करोड़ों लोगों के भाग्य विधाता है, ये विधायक हैं. तो आज as the Vice Chancellor has put, it's a very unique occasion, and also I can say it's a very historic occasion that where
the legislature, which is the policy making body, and academicians who are supposed to advise them. And this is the first occasion, I think, in our country where academicians have been called for so that they can share their views as far as their constitutional limitations are concerned, particularly in ever increasing and ever is a challenging subject like constitutional law, particularly the power sharing, mostly either horizontally or vertically. I know my young friends are here, who are all very brilliant and expert constitutionalists, but I venture to speak because, as my friend has said, Dhanam Moolam Idam Jagat. And the entire is what the small India, I think entire world is only because of this. And sir, I may start with this. Particularly, I confine myself to the fiscal relations. And fiscal relations, here we have, I mean, let us see, try to be a little bit, a little bit, because our honorable speaker has already given a very great idea about some of the most important principles, and also our vice chancellor. But I want to slightly go into the historical past. When, as far as the fiscal relations are concerned, we may have to go back, right, even beyond, it is beyond 1860 or 60s or so. So right from that time onwards, no, there were several states, independent states, which were never united. So the entire efforts, no, right, in 1990 and 1919 was only to integrate and bring unitary features. And unfortunately, finance was never given to Indians. Finance has always become only a reserved subject. And Indians were asked to only, they had to take care of welfare. That means they have to take no responsibility. But the power of money always rested with the British people. This is what was known as the hierarchical setup. Power with somebody and responsibility with somebody else. And sir, then came, there were some forces, and because of some historical conditions and all that, 1935 Act wanted that there should be a federal setup. Therefore, the entire 1935 Act modeled on the Canadian Constitution, it has tried to see that these a federal setup is meant for India. So 1935 Act has come, but it has not been fully implemented because of several reasons, including Second World War. So uske baad mein, there are several changes, and ultimately we got to see our independence in 1947. Uske pehle, it was on 9th December 1946. पहली बार हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम बैठे थे सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स तो जहां 13th December 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू while introducing the objective resolution which has बाद में become मुख्य उद्देश्य का कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें उसने पहले दे दिया था भाई all residuary powers will be with the states, with the units. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है वैसे ही residuary powers will be with the states so that states will have more independence. Our center will have only few functions. तो इसका मतलब क्या है इसी भारत ऐसी जो देश है अभी इसमें क्या है इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स में आ रहे हैं जैसे हम बोलते हैं ना इट इज नॉट ए मेल्टिंग पॉट इट इज लाइक ए बुके यानी बुके में क्या है घास का भी फूल रहता है और इसी गुलाब का भी फूल रहता है लेकिन सब इसी एकदम अच्छे रहते हैं तो ऐसे यानी हमारी actually this was what she was explained Sir Radhakrishnan also in the Constituent Assembly. Our India is not as of a melting culture, but it's a bouquet of all the flowers.
It gives no equal importance to a flower of grass as well as a flower of rose. कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है? अच्छा. तो ऐसी स्थिति में actually we wanted that to frame a federal setup where all the units will have absolute autonomy with an overarching power over the center, what was envisaged. लेकिन ऐसी जो चीज हुई है, that was on 14th and 15th August. I mean, that reminded anybody, Charles Dickens' Great Expectations. It was a spring of hope, a spring of hope and this winter of despair. साहब हम सबकी उम्मीदों की एकदम इसी साकारता हुई है और वही पीरियड में there was despair, devastation. People, the blood was flooding from west to the east, and bodies were not coming, as a whole. They were cut into pieces and they have come here. These are unfortunately the most tragic conditions which India had to face on 14th and 15th of August 1947. Well, friends, this has resulted in absolutely a change or a shift of thinking. भाई ये फेडरेशन यहाँ काम में नहीं आएगा, because here is a state where it is very difficult. और फिर अलग हो जाएंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा. जो हमारे 150 साल का जो सैक्रिफाइस हुआ था वो सब बेकार हो जाएगा. Therefore, I mean, with heavy hearts, when they have to again meet in 1948, they said, "Bhai, ये से नहीं होगा. Let us change then now preamble," and wherein they have only three most important factors. One is the most outstanding, and the most enduring unity and integrity of the country. और दूसरी है political liberty should be there. Everyone should feel politically he is independent. Third, most important is economic equality should be there by removing poverty. See, we should wipe out the tears from all eyes. Till then, I think the Indian nation cannot sleep. So these are the three most important things, with that we have started our constitution, or therefore we have to change the entire preamble the constitution. The preamble में change करते हुए हम ultimately you had given more importance. In fact, Dr. Ambedkar also, in fact, this was not discussed at all in the assembly also. भाई ये हमारे लोग हम आपस में लड़के मर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप में अपना मैत्री बढ़ाओ. ये मैत्री क्या चीज होती है? मैत्री का वर्ड अंग्रेजी में बराबर नहीं है लेकिन फ्रैटर्निटी बोलते हैं. Fraternity, somebody asked Dr. Babasaheb Ambedkar when he was converting himself into Buddhism in Nagpur. क्या डॉक्टर बाबा साहब आप क्या जी जैक्स रोसू फ्रेंच फिलोसोफर के लिए क्या लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी करके? अरे भाई हम किसी दूसरे को सीखने की जरूरत नहीं है. हम हमारे बहुत बड़ा मास्टर है गौतम बुद्ध ने हमको पढ़ाया था मैत्री के कोई इक्विवेलेंट अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को सोचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोग अलग बात करते हैं. तो मैत्री है फ्रैटर्निटी. सर उसके साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. सब ये हमारी से पूरी ऐतिहासिक जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वाज नेवर टेकन केयर ऑफ. This dignity of individual can be taken care of when you can improve their economic conditions, when you can ensure political stability. तो करके हमने एक राज्य अपना संविधान में एक मुख्य उद्देश्य का बनाया, उसके मुताबिक पूरा हमने संविधान लिखाया था. इसमें मेजर इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को अभी केशव राव जी बोल रहे हैं अभी
फिस्कल रिलेशंस, यानी इसमें फेडरल फिस्कल रिलेशंस, इसमें संगठित और इसी आई मीन व्हाट में यूनिटरी, सबको एकात्मिक। तो इंडिया is such a country where there are several disparities are there. One place is very rich, another place is very poor. And this even resources also are there, but we are not able to utilize them properly. Jharkhand is really rich. I think even they have got the richest mineral, that is, I think uranium also. इतना रिच होने के बाद भी आई थिंक दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वन. So similarly, there are some other states which are able to develop much better. So you have to need an equilibrium. यानी ऐसा नहीं कि एक स्टेट एकदम ऐसे रिच बन जाए और दूसरा स्टेट एकदम पुअर बन जाए. तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा क्या है, संविधान में बहुत सारे धाराएं हैं, एक अनुच्छेद है, उनके मुताबिक उन्होंने किया था. तो इसमें हमारे देश में ऐसी संगठित यानी फेडरलिज्म लाए थे. यानी फेडरलिज्म का कोई ठीक डेफिनेशन नहीं है. हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमेरिका का जो फेडरलिज्म वही फेडरलिज्म करके, दैट इज नॉट फेडरलिज्म एट ऑल. इनफैक्ट फेडरलिज्म हैज गॉट सो मच फ्लेक्सिबिलिटी. अमेरिका का फेडरलिज्म देखिए, वो 1789 में शुरू हुआ था. आज क्या है सब, इट इज मोर यूनिटरी देन फेडरल. और इसे आपको लगता है कि फेडरल करके, लेकिन इंडिया में क्या होता है, इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड. और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, सहकार, और दूसरा बोलते हैं प्रतिपक्ष, कॉम्पिटिटिव. सर ये दोनों के बीच में से अलग रहता है, मोर फ्लेक्सिबल इज नोन एज ऑर्गेनिक फेडरलिज्म. ऑर्गेनिक फेडरलिज्म यानी क्या है, जैसे शरीर होता है उसमें हमारे डिफरेंट भाग होते हैं, तो एक एक भाग इसी दूसरे सब शरीर के लिए उन्नति के लिए बढ़ जाती है. तो वैसा ही हर एक स्टेट, हर एक इसी अंग, सबको क्या है काम करना है. देन इट इज एन ऑर्गेनिक वन and it has to develop. It is a living one. Even federation also is a living one. And in a federation like the United States, you say it is क्या है, bottom up. यानी नीचे से आके सब स्टेट्स मिलके एक बनाते हैं, दैट इज फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स. हमारा क्या है, इट इज टॉप डाउन, ऊपर से नीचे का आया था. इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या है, एकदम फेडरल रहता है, नॉट एकदम फेडरल. सब स्टेट्स वर गिवन सो मच इंडिपेंडेंस. लेकिन सब स्टेट्स, अरे मुझे माफ कीजिएगा, स्टेट्स एटलीस्ट एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, यानी वी आर इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. We want equality, but we don't want to respect others' equality. We want freedom, but we don't want others to talk. We want financial autonomy, but we don't want to maintain fiscal discipline. तो ये सब में क्या होता है, because in such a big 40 crores of people, you have to see, we have to imbibe in them this type of fiscal responsibility. तो इसमें क्या है सब, अरे विदाउट अवर नॉलेज फेडरलिज्म हैज कम. को अगर आप देखे जाएंगे तो फेडरल है नॉर्मल टाइम्स में, लेकिन कुछ एबनॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, एकदम यूनिटरी बन जाता है. लेकिन कभी कभी इसी विदाउट अवर नॉलेज इट हैज बिकम फेडरल. मैं एक दो उदाहरण देता हूं. जैसे पहले हम कभी सोचे थे लिंग्विस्ट, जैसे पहले किया था एक किसी, they have divided the country, and then you see 1956 में again you see all the states are formed on the basis of language, and now you see every state almost has got Hindi, English and regional language, and this is a type of compromise where you see all states are happy, that's it, nothing is imposed on them. This is a type of federalism. और दूसरी है क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म. जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, पहले 1991 के पहले देयर वाज प्योरली यूनिटरी सेटअप, where you have to depend only upon the center.
लेकिन 1991 के बाद जब लाइसेंस राज गया, then you see when they have liberalization has come, now chief ministers have become more important. They have become so important in the federal financial system. और सिमिलरली फिस्कल फेडरलिज्म करके बोलते हैं. फिस्कल फेडरलिज्म का क्या है? अनोखा स्कीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या होता है, देर आर सो मेनी बैलेंसिंग व्हील्स. लाइक फाइनेंस कमिटी है. ये फाइनेंस कमिटी जो है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसीविंग. ये दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल बॉडी. दिस इज प्योरली कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट्स इन इकोनॉमिक्स. और इसको क्या है, प्रेसिडेंट से अपॉइंट्स, एंड इट इज दिस फाइनेंस कमिटी व्हिच गिव्स रिकमेंडेशंस. भाई स्टेट्स को इतना चाहिए. यूनियन इज इन ए पोजीशन टू कलेक्ट नो मोर एंड मोर टैक्सेस. इट हैज गॉट नो बेटर मशीनरी. स्टेट्स आर नॉट इन ए पोजीशन टू कलेक्ट मनी, नॉर इज इन ए पोजीशन टू लेवी द टैक्स आल्सो. तो लेकिन टैक्स का तो States are collecting. fiscal federalism. Fiscal federalism. Huh? Fiscal federalism. Yeah. तो मैं जरा जल्दी खत्म कर लेता हूँ. तो इसमें taxes and all these things are collected and distributed. Center is in a position to collect no better and to distribute to the states. और एक एक फाइनेंस कमीशन आके तो इनका टैक्स शेयरिंग जो है, टैक्स शेयरिंग का क्या है, इसका रेशियो बढ़ा दिया था. पहले क्या था, 20% था, और बाद में क्या होता, 27% था, बाद में 30% था. अभी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन ने कितना किया था, भाई जी जो आप कलेक्ट करते हैं उस पर 43% यू हैव टू गिव इट टू द स्टेट्स. और स्टेट्स को क्या है, बिकॉज स्टेट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट नो स्टेट्स में रहता है. In addition to this, not merely this one, center has got more response to see that all regions that develop simultaneously. करके उसके हाथ में स्पेशल पर्पस ग्रांट्स करके हैं. स्पेशल पर्पस ग्रांट्स, इसमें क्या होता है एक्चुअली, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी भला करने के लिए, उनकी वेलफेयर करने के लिए यू कैन डिमांड द सेंटर, and they are known as conditional grants. ये कंडीशनल ग्रांट्स के लिए भाई हमको इसी 3,000 करोड़ दो. वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस ऑन ट्राइबल्स बिकॉज दे आर द पीपल, अनुसूचित जाति जो है, जनजाति, तो उनके लिए. और ट्राइबल एरियाज भी है, क्योंकि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं. इसी जब इसी चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, ये लोग इसी जमीन पे भी खड़े नहीं हो रहे हैं. तो ये किसके लिए है? तो आप इसलिए मैं बताते जी, आपके ये झारखंड के भाग्य विधाता है. If you don't take care, who will take care of them? तो ऐसे ही ये बाद में एक GST करके आया था, माल और इसी सेवा कर का. ये सब इसी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया में लोग इसी, पहले आपको मैं बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी करके वो 1970 से, यानी दे वर ऑल सो डिवाइडेड. They wanted to come together क्योंकि उसमें यूनिटी में क्या है, बहुत स्ट्रेंथ है सब. तो यूरोपियन यूनियन में आया था. तो इट वाज ए पैराडॉक्स. आई थिंक इन 2017 ब्रिटेन, यानी सर इतना कि होपलेस और इररेस्पॉन्सिबल वोटिंग ऑफ पीपल रेफरेंडम में चला गया था. ब्रिटेन शुड कम आउट ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट करके बताया था. द रिजल्ट इज अभी भी उनको लेकिन at the same time, India, see, it's the greatness of all the Raj, all states, they have come together, they have surrendered their sovereignty. सर हम टैक्स ये नहीं लेंगे, आप ले लो, आप इकट्ठा करके हमको दो. तो सर इसी आज ये 2-3 साल से कुछ तकलीफ होंगे, और ये तकलीफ क्या है, टेम्पररी है. लेकिन इससे क्या है, आज कम से कम इसी गए 4-3 महीने से देख रहे हैं जिसका कलेक्शन बढ़ रहा है. 160 crores, 160,000 crores like this.
तो देन इसी आपका शेयर भी बढ़ेगा। और आगे बढ़कर ये भी हो रहा है बिकॉज द स्टेट्स आल्सो वर गिवन देयर ऑटोनॉमी टू टैक्स नो लिकर एंड आल्सो द पेट्रोल. And I think now see they are also trying to bring petrol also in that. Though the state to collect the finances still, because the center is in a position to collect in a better way because they have gotten a better machinery. और मैंने ये भी सुना कि सेवरल स्टेट्स में कैसे कलेक्शन बहुत अच्छे नहीं हो रहे करके, तो जीएसटी का सी अलग चल रहा है, देन इसी उसका. और ओवर एंड अबव दैट द फाइनेंस कमीशन इज ऑलवेज देयर. और सब ऐसी है कि ये यानी भारत के लोग ऐसे कल्चरली दे आर वन थिंग. कोविड के टाइम में नोबडी नोज द एंटायर कंट्री अनइंटेंशनली inadvertently and accidentally it has become one. वैसे सब calamities जब आते हैं then is naturally it automatically comes together. You need not, there are no political boundaries. This is what I see called organic federalism. So okay, last. So last. So GST का जो है इसी there are so many states are suspecting and but see there is no need of making any doubt about it. GST is the perfect example of economic federalism. और उससे क्या है देश को भी एडवांटेज है और राज्यों को भी एडवांटेज है. और इसी इसके अच्छे कलेक्शन से क्या होता है एंड फाइनेंस कमिशन इज ऑलवेज देयर. In addition to this last under article 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स करके है. यहाँ क्या होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलते हैं. इसमें क्या है the center can give the grants to any state प्रयोजन के लिए. ये प्रजा क्या होता है प्रयोजन क्या होता है इसका क्या है सर. पहले क्या बोलते हैं प्लानिंग कमीशन करके रहता था. ये प्लानिंग कमीशन ऐसी जो अपना है जिसका लाठी उसका भैंस. भाई इसका ये हमारा पार्टी है और इसको पैसा दे दो और ये हमारा पार्टी नहीं है करके अंडर 282 grants नहीं receive were purely discretionary. Nobody could question it. And now unfortunately नीति आयोग आने से और आपका टैक्स शेयरिंग बढ़ने से ये सेंटर का जो है पार्टीशन एटीट्यूड बहुत कम हो गया. इसकी वजह से फेडरलिज्म इनफैक्ट नो इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री टू द स्टेट्स and also the finance commission and also particularly for that planning commission का जो आया था ना that control of this is a very good sign that we have won and federalism has become really the greatest principle. Autonomy to the maximum extent, at the same time public purpose. A public purpose sir, public means common man. उसकी भलाई करो और इसी उसकी पैसा है उसके लिए खर्चा करो. And sir, see entire system of justice is only public purpose. अगर उनके लिए नहीं तो किसके लिए है. बस thank you sir. Sir, I understand that for a teacher to stop talking when he starts talking is difficult. But then, sir, I am thankful to you for highlighting the fiscal scenario in a federal setup as of now. And before I invite the students to ask questions, let me have the privilege of presenting to you Sri Nalin Kumar ji, the Secretary, Ministry of Law, Chief Secretary, Ministry of Law. Sir, we are proud to have you amidst us. I also have the privilege of presenting to you Dr. Chaturvedi, the Principal of Chota Nagpur Law College. I understand that you are the students of this college. And I also have the privilege of presenting to you Sri Chakshurai ji. So he is from the Parliamentary Research Studies. He is helping us, guiding us, and ensuring that this entire conference
goes on very smoothly. And I think I have a very young legislator. Let's all welcome Amit Kumar Mandal ji. आपका स्वागत. Now, we have received several questions on this particular topic, but we have identified one question which can be asked. That student who is given the privilege. The concerned student who has a question, kindly raise your hand. On fiscal federalism. The concerned student, please raise your hand. Yes. Please state your name and the university. Good morning, sir. This is Archita from Nusral Ranchi. My question is, like you stated that the federal fiscal structure was made in the eve of the independence of India, and it was mostly based on the need of unity. Am I audible? Yeah. So my question was that the federal fiscal structure right now is based on the needs of the newly independent India, and at the eve of the independence, unity was the need of the hour. So what are your recommendations for an India which is receiving a wave of liberalization, globalization? Sir has already answered that question to you. He said liberalization is welcomed. It ensures economic equality and upliftment of every individual economically. And he says GST is virtually giving a power to the state, and it's a welcome experiment that is being done. And he says now his position of the states is far better vis-a-vis what it was at the time of independence. Thank you very much. I have taken the privilege of answering on his behalf. And now I request the next resource person. Friends, I am not going to tell his name. Well, he is a law graduate from Delhi University, LLM from University of Nottingham, PhD from Jawaharlal Nehru University, a specialist in constitutional law, a visiting professor at the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. He is none other than Professor Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, Delhi. So with time discipline, I hand it over to you. If I follow, I'll get something extra financial benefit. Definitely, sir. Like, I'll follow 15 minutes and I'll keep a watch here also to follow the 15 minutes. My time starts now, it's 12 o'clock. So 12:15 I'll finish. मेरे इंट्रोडक्शन में एक जो ज्यादा चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई बिलोंग टू दिस स्टेट एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम देवघर डिस्ट्रिक्ट. सो मेरा जीवन बाल्यकाल यहाँ से गुजरा है. और लेट अस वेलकम द सन ऑफ द सॉइल. स्टीफन मारंडी सर को भी हम लोग जानते हैं, बहुत बार सुने हैं बचपन में. तो बहुत there is a peculiarity. Son of the soil is SOS. So Save Our Souls is also SOS. Yes, sir. आदरणीय सभापति महोदय जी, श्री रविन्द्रनाथ महतो सर, श्री स्टीफन मारंडी सर, आलमगीर आलम जी, और हमारे मुख्यमंत्री सर अभी है नहीं यहाँ पर, बट उनका भी अभिनंदन करते हैं. श्री हेमंत सोरेन, प्रोफेसर हमारे वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर केशव राव सर, प्रोफेसर लक्ष्मीनाथ सर, प्रोफेसर शिव कुमार सर, and all the colleagues sitting here of the dais and on the dais. ये बड़े गर्व की बात है, जैसा कि सर ने बताया मुझे, और what I heard from the speaker sir in the morning session, that this is the unique initiative which has been taken by the Jharkhand Legislative Assembly on a subject which we have been particularly part 11 of the Constitution, between the relationship between the union and the states. There's no word center in the mention in the Constitution. It's a union and state that is there in the Indian Constitution. The topic which I am going to speak and share with you today on the distribution of legislative powers between center and states, और हिंदी में जो उसे कहे अगर हम,
तो उन बातों को हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, तो ये संबंध बड़ा ही अनोखा है और काफी अच्छे तरीके से एलोबरेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू particularly demarcate the legislative powers of the state assemblies and legislative powers of the union government and Indian parliament. That is there. But time to time we see there is a conflict, it happens. And when conflict, then we go to the court, so state go to the court, and then we have series of judgments on the, like, particularly the conflict between the state legislation and union legislation, and also about the repugnancy, that is the article 254. अगर हम इन विधायी शक्तियों की बात करें, राज्य और केंद्र की विधायी शक्तियों को, 3 अनुच्छेद, जो संविधान के 3 अनुच्छेद हैं, पर्टिकुलरली देयर आर 3 आर्टिकल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254. These are 3 important. The entire legislative powers start from 245, ends with the 256, I think 255, and then administrative function and other function in the part 11 of the Indian Constitution. जो सबसे बड़ी बात है कि what we have done in our constitution, the legislative part, this relationship between the union and states, that we have borrowed, as like Professor Lakshminath sir has mentioned, शुरुआत में बताए कि हमारे संविधान में बहुत ज्यादा छाप जो है ये हमारे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है, और उसके अंतर्गत खास करके जो धारा 100 और धारा 107, जहां हम केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों की बात करते हैं, तो जो धारा 100 और 107 है उसका काफी ज्यादा हमारा इम्पैक्ट है। हमारे 245, 246 और 256 की बात करते हैं, जो हमारी केसेस भी जो डेवलप की है, डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस की हम बात करते हैं, और ऑल्सो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट थ्योरी, जो बाद में 1989 में सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन कोर्ट के जजमेंट में एस्पेक्ट थ्योरी की बात आई थी। ये सारी जो केसेस हैं, खास करके जहां हम इन रिलेशनशिप को एनालाइज किया और कोर्ट ने किया, इन्होंने खास करके कनाडा और ऑस्ट्रेलियन जजमेंट्स को काफी ज्यादा हमारे इसमें इनकॉर्पोरेट करके पीस एंड सब्सटेंस की बात को की जिक्र की। तो एक जो सबसे बड़ी इफ वी से द थिंग्स वर मूविंग वेरी स्मूथली इन द इनिशियल स्टेज, why from 1947 after the independence till 1967, so 2 दशक में हमारी जो आजादी के 2 दशक थे, 1947 से 1957 का, 1957 से लेकर 1967 तक का, तो जो भी डिफरेंसेस होते थे, चाहे ये पार्ट 11 की बात करें जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात है, 245 से लेकर जो भी बातें हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको बिकॉज इन 2 दशक में, from the 1947 to 1967, in the it was largely because the government in the state and government in the center are from the same party. कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट राज्य में भी थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में भी थी, तो जो भी रिलेशनशिप, चाहे वो फिस्कल रिलेशंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो और लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, जब भी कुछ ऐसे बाधाएं आए तो उसमें कोई इशू नहीं बनी ज्यादा। एक आध केस छोड़ के जो मैं 1963 का, मुझे लगता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें थोड़ी सी बातें आई, लेकिन मोर और लेस हम जो 2 दशक था उसमें बड़ा स्मूथ, कोई भी तो इनका उद्देश्य यही होता है कि हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स की किस तरह से हम उनको हल करें, और जहां तक हो विचारों से और विवाद से और डिस्कशन से भी हम सारी चीज को कर ले, तो हमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोर्ट की वजह से हम काफी समय अपना जो नष्ट करते हैं और जूरिस्प्रूडेंस को हम देखते हैं, जुडिशियल डिसीजन को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं। और ये वर्क किया, ये काफी ज्यादा वर्क किया हमारे 2 दशक में, 1947 से 57 के 67 में। जैसे हमारे बहुत सारे यहाँ पर आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और कि बहुत सारी उनकी जानकारी होगी, उनको अनुभव भी होगा कि किस तरह से अगर सेम पार्टी पॉलिटिकली रहती हैं तो आपस में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन खत्म करता है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, इसका उद्देश्य है कि हम किस तरीके से पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलते हुए, और हमारे जो ग्रामीण है, जो पिछड़े व्यक्ति है, जो समाज के वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, तो ये सारी जो अधिकार दिए गए हैं, इसका अधिकार का एक ही उद्देश्य है, जो मैं समझता हूं
कि किस तरीके से समाज की प्रगति हो, किस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लिया जाए और उनका उत्थान हो, तभी ये सारी शक्तियां दी गई है जो डिफरेंट लिस्ट में है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। अगर हम बात करते हैं तो हमें उस पर वर्क करने की जरूरत है। और तो हम अपनी समय राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें ज्यादा नष्ट ना करके इन बातों पर फोकस करें तो हमें लगता है कि हमारा उत्थान होगा, हमारे गरीब जनताओं का काफी उत्थान होगा। जो हमारा संविधान बना, जो हमारे फेडरलिज्म की बात की, वो बोरो किए। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपने बताया कि वी डोंट नीड टू गो इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेदर वी आर फेडरल, क्वाजी फेडरल और यूनिटरी। आपने बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किए अपने विचार, और उसमें आपने ये बात भी कहा हमें उसके कैरेक्टर पर फंसना नहीं है। हमें पता है कि हमारा क्षेत्र अधिकार कहाँ है, हमारी जुरिस्डिक्शन कहाँ है और हम किस एस्पेक्ट पर लेजिस्लेट करते हैं। तो ये ड्यूटी जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन का अगर हम उनको बताया जाए, ड्राफ्ट्समैन ये बताएं कि हमारे जो लिस्ट 2 में और जो हमारी सूची कहते हैं संघ की दूसरी सूची में 7वीं अनुसूची के दूसरे सूची में जो लिस्ट 2 है स्टेट का, तो अगर कि स्टेट के लेजिस्लेटिव और लीगल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ये बताए कि ये सारी चीजें जो है, तो हम बहुत ज्यादा हद तक जो पहले असेंबली में आती है उसके बाद वो बीचों पे खत्म कर सकते हैं। सेम डिपेंड करता है यूनियन में जो लेजिस्लेटिव लॉ मिनिस्ट्री है, वो बताएं कि हमारा क्षेत्राधिकार फर्स्ट लिस्ट में कौन सा है और कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट में आप भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो इन चीजों की अगर थोड़ी सी ये की जाए तो हमें लगता है कि हम काफी हद तक जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर बेस्ड है सर। जो कितना सर है, समय कुछ गड़बड़ा गया लगता है, कितना मिनट बचा है? 4 मिनट, मेरा उल्टा घड़ी देख लिया, मैं सवा यहाँ 12:30 हो गया तो इसलिए 4 मिनट है। तो हमने जो उस पे देखी वो 3 बातों पर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, उस पे हमें देखने के चिंतन करने के। तो हमारी जो संविधान निर्माता हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने डिबेट किया और सारी चीजों को उन्होंने फेडरलिज्म को एनालाइज की, उन्होंने दे हैव एग्जामिन्ड द फेडरलिज्म existing in the Canadian, in the United States and even in the other jurisdiction and decided the word to put union. So सोचे कि उसमें बहुत सारे अराउंड 600 प्रिंसली स्टेट था, बहुत सारी बातों को लेके तो उनके दिमाग में एक बात थी, वी हैव टू हैव फर्स्ट पिलर की स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक जो हमारा फर्स्ट पिलर है फेडरलिज्म का, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज सम वे। हमारे देखते हैं कि जो रेसिड्यूरी पावर भी है, जहां लेजिस्लेटिव पावर में क्या करते हैं, आर्टिकल 248 अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है तो रेसिड्यूरी पावर भी यूनियन को दिया गया। इन कॉन्फ्लिक्ट में भी यूनियन लेजिस्लेशन, तो हम कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेटिव पावर को भी हुआ, व्हेन वी एनालाइज केयरफुली वी फाइंड सम काइंड ऑफ like importance has been given to the union government, and that is the deliberate and very conscious effort during the constituent assembly. So first pillar is our federation is strong and union is strong. Second is it has also scope for flexibility, लचीलापन, जिसको हम कहते हैं लचीलापन। इसमें लचीलापन भी है, इसमें कभी कभी सारी बातें होती है, उसका स्कोप ऑफ एकोमोडेशन जो हम कहते हैं, तो उसमें बात का जैसे होगा इंटर स्टेट काउंसिल जब आ गई तो कुछ संस्थाएं फंक्शन नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात है, उसकी स्थापना जब हमारे सरकारिया कमीशन में 1983 and finally 1988 सरकारिया कमीशन had submitted the report and finally it came into effect in 1990 interstate council। तो ये जो बॉडी है, अब ठीक है 2 मिनट है, मैं समय पे खत्म करूंगा, मुझे सर से पैसे भी लेने हैं। so 2 मिनट, so we have, so I'll be timely। so उस समय लचीलापन में ये चीजें थी कि इंटरस्टेट काउंसिल की जो बातें थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर संवाद को बढ़ाने की जरूरत है। जो हम देखते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ गैप है, जो चेंजेज आती है। एक लगता है कि ऑल ऑफ सडन हो गया। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल उठी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर काफी चर्चा हुई। अगर इस चर्चे को हम खत्म कर सकते थे, वी कुड हैव मिनिमाइज्ड द कॉन्फ्लिक्ट had we involved the states from the very stage and then said that union is planning to bring, like state is represented, member of parliament is there, how active their participation। so हम इस संवाद को अगर बढ़ाएं इंटर स्टेट काउंसिल की तरफ से तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से लगता है। और थर्ड पार्ट व्हाट आई सी, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे फेडरलिज्म में है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बस तो 1 मिनट तो है, 60 सेकंड है ना, 49 पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हमारे फेडरलिज्म का एक पिलर है, जिसको हम हिंदी में सहकारी संघवाद कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं।
अनुराग जी हमने देखा था सुबह में उसको चेक किया, तो सहकारी संघवाद को कहते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो कहीं से कहीं कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ा जा रहा है। हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण कुछ हद तक, I don't want to go in the political discourse, but we feel that states are not so happy the way they are looking or aspiring for some kind of assistance from the union. और यूनियन को भी कुछ ही पॉलिटिकल अलाइनमेंट ही एक एंगल लगता है, तो वो डेवलपमेंट जो हो रही है, दैट इज द डेंजर फॉर द फेडरलिज्म एंड इंडियन फेडरलिज्म के लिए। हमें इन तीनों बातों को ध्यान रखते, राज्य को भी ध्यान रखते हुए कि वी आर स्ट्रॉन्ग सेंटर, देयर इज नो डिस्प्यूट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसी उम्मीद से करता हूं कि सारी बातें एक चर्चा थोड़े समय में जितने हो सकती किए, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय रविंद्र जी सर, स्टीफन मारांडी सर और अदर आदरणीय महानुभाव मंच पर जो बैठे हैं, इस संवाद को आगे ले जाएंगे, इससे कुछ सुधार होगी और हमारा राज्य झारखंड आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। May I request the student whose question has been selected? Concerned student, please raise your hand. Center State Legislative Relations. Good afternoon, sir. Good This is Lakshita from NUSRL Ranchi. Sir, what development do you see in the past 7 decades with regards to the center-state relations? Legislative relations. Yeah, like, development, if I say, like, if I take the last pillar from cooperative, so it has become competitive. That is very important development if I say 7 decades. So 7 decades is starting from 1947 to 1991, more or less. It's like, off and on some conflict, other things. But major change has taken place. It's like, Professor Lakshminath sir made mention after globalization. Globalization we see. So now state can also go independently, state खुद भी जाके attract कर सकते हैं. So a new kind of development what we are witnessing in last 3 decades. So now वो भी हो गया तो 40 वर्ष. So you can divide the development in 2 parts. First part is more or less same speed it moved from the 1947 to 1991, 35, 36 years. And later on what we see is more an economic industrialization, globalization, so how a state is going to integrate. That is the major development, and which has to go simultaneously with the fundamental principles of cooperative federalism. So we all have to work to keep intact the cooperative federalism. So progress of union and state will take place in a proper manner and will minimize the conflict between the center and state. All right. Thank you very much. I think all the resource persons must emulate him. Thank you, sir. In observing the time limit. Sir, we are grateful to you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And may I add to what he said already, we have invented the doctrine of pith and substance, then we have the doctrine of colorable legislation. Well, all these are wonderful developments insofar as ensuring that the legislative distribution of subjects doesn't create any more problems. Now, the next speaker, resource person, well, he also comes from Delhi. You know, when we talk of constitution, most of the times we have to talk about the capital, the Delhi. And he taught in the University of Delhi. And then he is now the faculty of National Law University, Delhi. And he is also having his roots to Jharkhand. May I have the privilege of inviting Dr. Neeraj Kumar. He is going to speak on working of interstate councils vis-a-vis the fiscal and administrative federalism in India. Thank you. Let's all welcome him. Sir, 12:41. Yeah, I'm putting my timer on. No, it appears that I am the villain here. Naturally. I believe in only one statement, sir. This additional time I'm going to give you. A successful moderator is one who is felt and who need not be heard. So I'm not speaking. I'm only making sure that everything goes on as smoothly as possible. Sir, understand in that respect. Yeah. And kindly, please go ahead, sir. Your Yeah. time starts now. So I understand it as if a moderator is Damocles sword, always hanging on your head. So, honorable speaker and learned members on the dais and my colleagues in front of me, students and other fellow guests. So,
when we speak, when you are asked to speak after two speakers who have already spoken on your topic, it becomes a little bit difficult task. And also it becomes a little bit easier in the sense that you know that there are certain things which you can just leave. Uh, so my topic is to talk on interstate council. So it is integral part of what we call as in the sense that to actually operationalize relationship between center and state. But since my mandate is only confined to fiscal federalism, so I will mellow down or narrow down the idea of interstate council in the context of fiscal federalism. So before going further and looking into the logic of uh, fiscal roles which an interstate council is supposed to play, I will take some time in actually laying down that what it is supposed to do and in what context interstate council would be helpful in doing that. So we know as a matter of fact that the term fiscal federalism is not a constitutional term in that sense, because it was coined by Richard Musgrave in 1959, who was an economist. So fiscal federalism essentially is a term relating to economic planning. It is, of course, it has been given a constitutional status under our constitution, that is Article 263, specifically talks about the idea of interstate council. Now, one of the things which Constituent Assembly did, that so many things it actually operationalized immediately. With respect to other things, it left to the wisdom of future government and the parliament to operationalize those concepts. So interstate council being one of those ideas. And it only in 1990, it actually materialized when the presidential order, as is required for the purposes of 263, was actually issued. Now, one of the things which I must also flag at the onset, that is, we understand that there are many of political compulsions when legislatures at different level actually interact. But at the same time, we must not be oblivious to what we call as structural issue and not confine us only to episodical issues. That is case mein kya hua? Rather than looking into that, we'll have to look for a larger picture over a period of time, how it has been working. That only will allow us to actually rectify the problems which are there. So one of the things which you can always see that it was operationalized quite late, 1990. So since 1950 to 1990, the central government essentially, because presidential notification is nothing but the advice of the Central Council of Ministers, decided not to come up with interstate council. Or it is not to suggest nothing else was there, because they might have thought that Finance Commission is there, Planning Commission was working. So they must have thought that these are the institutions which will take care of that. Maybe it is the logic of coalition politics which actually compelled the central government to come up with interstate council. Now, idea-wise, it was supposed to meet at least thrice a year. But we know as a matter of fact, hardly a dozen meets have happened in so many years. That is, it is 32nd year of presidential notification. And it is irrespective of the government. So it is not about one government or the other government. So, you know, as a matter of fact, that in 2016, after 10 years, the interstate council meeting happened. So the last meeting was 2006 and then only in 2016. So this also is an idea which says that we must not only talk about what is the language of the constitution or the law. More important is to actually look into the working of constitution, that how constitution is working. So in that context, it appears that central government, irrespective of which party or which kind of alliance is there, always think that interstate council meetings may not be conducive for what we intend to do. And that is what state legislatures, irrespective of political affiliation, is supposed to bring their collective wisdom together, irrespective of whatever other political affiliations, that it is imperative to have a periodic interstate council meeting. And it is not a issue of serious compromise, as my previous speakers have already suggested, that we'll have to actually acknowledge elephant in the room. That is, come what it may be the intention and all this kind of thing, Indian federalism essentially is skewed in favor of center.
So that is a reality of a day. Of course, it is much more wider than what it used to be, say, in 1950, but surely it is much more centralized. So that is what Constitution actually does. So the idea is this, that ultimately decision would be made by the respective legislatures only. So interstate council is not an institution which is supposed to actually definitively make a decision. It is a recommendatory body. Now, under those circumstances, it is very important that we must be having an effective recommendation, and that can happen only through interstate council. Now, we know as a matter of fact that distribution of all list, that is 7th schedule, was based on this idea that things which are of national importance should be with center, things which are of local importance should be with the states, and the things which have a kind of flexible character, essentially of local importance, but sometimes attains a national character and requires uniformity, are in concurrent list. Same is the logic with respect to fiscal federalism also. That is, if you'll see, the other economist from United States of America, William Oakes, actually suggested that while fiscal planning, the most important thing which is to be looked into is this, that which would be the effective place where the policies can be better understood and effectively implemented. So that is the whole idea. And that is not, and we can learn from something which is quite extraordinary. We are talking about states which are part and parcel of the same country. Just think about European Union. European Union is conglomeration of countries. So sovereignty issue is much more there. But they also recognize what we call as principle of subsidiarity. That is, they say that although European Union has a parliament, but things which are of local importance has to be left to the nation which is supposed to decide. So that is an idea which is interstate council must take care of. Now, Vijay Kelkar, our erstwhile governor of Reserve Bank, Raghuram Rajan, has dealt with so many of issues in this area. So essentially the idea of Vijay Kelkar committee was this, that there are multiple pillars of this fiscal federalism, and he thought that interstate council happens to be most important pillar because of the fact that one, planning commission has been done away with, and secondly, GST council is essentially not much more recommendatory in that nature, or not having a wider kind of vision which an interstate council can have. That is the kind of ambit which it can have. So rather, his idea was this, that interstate council can help effectively in understanding GST issues also. That is how that has to be taken care of. The other thing which all of us might have realized this point of time, which would have been difficult if I would have been speaking about all this, say, in 2019. So two important things which happened, that is COVID. So we realized that how COVID is not only a health issue. COVID actually is an issue which affects the fiscal distribution also. That is, who will do what and all this kind of thing. And in what manner effective allocation of resources, and in what manner effective allocation of resources can happen for the purposes of meeting health emergency, for the purposes of meeting so many of demands which can arise. So that was one. The second was the failed agriculture bill. So although all this are otherwise will appear as a domain of public health, other will appear as a domain clearly of agriculture, but essentially what were the rationale which were behind all this? So we know as a matter of fact in case of COVID, so just classic example, initially central government said that you will be buying your vaccines and we will be buying our vaccines separately, so on and so forth. So essentially these are all fiscal issues that ultimately who should be taking that tab. Ultimately the idea is this, that if you're buying something, somebody had to pay. And similarly in cases of agricultural marketing amendments and all this kind of thing, we know as a matter of fact that that it has a deep-rooted connection with the state fiscal issues. That is, all these boards, agriculture boards and all these kind of things actually are great source of revenue for the purposes of state. So under those circumstances, these are also fiscal issues which we are supposed to look into in the larger context. So fiscal issue cannot be one, that is quite obvious. That is one which is very narrow. So interstate council's mandate with respect to fiscal issue should be one, classical fiscal issue. That is, we understand that taxes are there. We know as a matter of fact, I will not go into details of all this because my previous speaker has already spoken about that we know there are different kind of taxes, who will collect, who will actually ultimately distribute and all those kind of things. And in this context, interstate council
has another role also to play, because we know as a matter of fact that initially, with respect to all fiscal distribution, we were talking about only 2 tiers of governance, that is center state. Conveniently, we forget the 3rd tier of the governance. And that is something which was quite important. And that is something, although not identical to what our father of nation would have expected, Mahatma Gandhi, that is the village governance and all this kind of thing, but it is something closer to what his idea was. And that is also something closer to the simple idea that is fiscal federalism actually also warrants that the governance at the root level, because once we recognize this principle, and state cannot actually what we call as run with hare and hunt with hound. That is, when they are talking with center, they'll say that you must delegate and our rights are to decide at the local level. Similarly, states at their intra-state level must also realize that the same responsibility of the state is towards this grassroots level organization, that is the 3rd tier of the governance, panchayat, and the municipalities and all this kind of thing. So that is also something which is required to be discussed at the interstate council level. That is very important. The third thing, which because of the fact that now, as we know, that planning commission has been done away with. Okay, so essentially it is finance commission which will essentially recommend. Now, one of the other thing which interstate fiscal council is supposed to talk about, and it may require many of deliberation with respect to whether it will require some amendment to the laws and the constitution, that is in the context of that in what manner distribution can be done, because it leaves much of leeway. And as one of my previous speaker was talking about, that one idea can be this, that the states which are performing better should be given better allocation. And Raghuram Rajan committee and Arvind Panegriha also suggested that under those circumstances, you should categorize states. That is, there are certain states that are doing quite well with respect to use of resources which are allocated to them, fiscal resources. So under those circumstances, what you should be doing, there should be automatic triggering mechanism. That is, the power of delegation should not be so clearly in the hand of deciding authority. There should be automatic triggering mechanism. That is, you allow them to expend, and only if there are certain riders, then you see that those riders are whether followed or not. But this also is oblivious to this idea, which most of the times we don't see is being actually talked about in the policy framework. Of course, the state which are there situated will always talk about. Yeah, so it's 13 minutes. I will wind up. So I stop watching saying 13. So under those circumstances, the realization has to also dawn that, as we always say, that the growth rate is decided by the slowest mover. So you cannot actually think about, when you are talking about allocation of resources, that it should be only in the sense that only those who are doing well should be given resources. Okay, because ultimately whether country as totality prospers or not would be decided on in the light of how those part of the country are faring which are not so better off. That is there. The other thing is we should, and that would be the last thing, that is because of the time constraint, that is we also are supposed to look into impact of Article 288(2) of the Constitution, which decisively tilts the fiscal idea and distribution of the powers. Because 282 says that irrespective of who has legislative competence to frame laws in a subject matter, in cases of need, allocation can be made to an area which is not whether confined to center or the state. So ideally it is okay, but how it has actually worked, because ultimately resources are with center. So it has made center much more powerful. So just for example, Rural Employment Guarantee Program, Education Act, and all this kind of thing. So with respect to the policies which are supposed to be taken care of the local level, because center has the power to fund under 282, they start funding. So it's okay, they are starting funding directly. But interstate council must take up this issue, that is with respect to how fund allocation must happen. That is okay, you give all this kind of policy, but implementation and ultimate at micro level decision with respect to how this allocation would be done should be left to the state. So I stop here, 15th minute. Thank you. I think somebody is raising the hand there. Yes, sir. Yes.
Arun, this is Rahul Kumar from Chotanagpur Law College. Sir, I am asking one question. In the context of GST pillars, can interest council problems and which is Can you keep your mic a little bit away because it was echoing? I could not hear it properly. Yeah. Sir, I am asking one question. In the context of GST pillars, can Internet Council has right to remove the GST difficulties which is delegated to one nation and one tax? The GST problem has been power delegated to finance commissions. So, as I have already laid down, the Interstate Council has recommendatory role to play and consultative role to play. Decision has to be actually made by allocation by Finance Commission and GST Council. So, Interstate Council has no power to actually go for a binding recommendation so far as GST Council and Finance Commission are considered. They are clear constitutional bodies and they have the decision with respect to that. But they have a recommendatory role to play, and given the fact that the chairperson of Interstate Council happens to be Prime Minister and the standing committee chairperson the standing committee president happens to be the Home Minister. So once the Interstate Council decides to do something, I don't see any political hurdles that Finance Commission and GST Council will not agree on that. So legally, that is not situation, but practically, if Interstate Council comes to an agreement, I see all the possibility that GST Council and Finance Commission will be or would be on the same page. Thank you very much, sir. We are Thank you. grateful to you. Thank you. Thank you. Friends, I have the privilege of inviting because I'm sure that you are not yet hungry for food. You are hungry for thoughts. Therefore, let us have one more speaker before we adjourn for lunch. I now have the privilege of inviting a professor of law, registrar of Hidayatullah National Law University, Raipur, associated with Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, and a very famous professor dealing with the subject of intellectual property law, Dr. Uday Shankarji. Sir, we request you to kindly speak on a very, very volatile topic. I am giving the adjective volatile because he is going to speak about on the topic role and functions of governor vis-a-vis or in Indian federalism. Sir, thank you very much. All yours, but sir, only for 15 minutes. Sir, thank you very much, and good afternoon to all of you. माननीय अध्यक्ष जी श्री महतो जी और सभी सम्मानित सदस्य मंच पे आवासीन और हमारे सीनियर कुलीग्स प्रोफेसर सिन्हा सर, प्रोफेसर शिव कुमार सर, प्रोफेसर यूके सर और प्रोफेसर अनुराग, प्रोफेसर श्यामला एंड Professor Pathak and Professor Chaturvedi and Professor Neeraj. गवर्नर का टॉपिक मैंने लिया और सोचा कि गवर्नर के टॉपिक के बारे में कुछ बोलूं। जब हम इंडियन फेडरेशन को देखते हैं तो जैसा कि पहले सर ने बताया कि हमारा फेडरेशन का मॉडल टॉप बॉटम मॉडल है। दो तरह के फेडरेशन के मॉडल देखे जाते हैं दुनिया भर में, एक है होल्डिंग टुगेदर, एक है कमिंग टुगेदर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फेडरेशन का मॉडल है वो होल्डिंग टुगेदर का मॉडल है, जहां पे एक कोशिश की जा गई है कि राज्य जो है वो अलग ना हो। और कमिंग टुगेदर का मॉडल जनरली यूएस का मॉडल बताया जाता है। तो पूरा फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में वो इस बात पे निर्धारित करता है कि नेशन की सर्वाइवल बनी रहे, और इसके वजह से ही सेंट्रल को ज्यादा पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रलाइज्ड पावर जो है यूनियन के पास कहीं ना कहीं फेडरेशन के मामले में ज्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा वजह यह है कि राज्य जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से आए और उनको एक बना के रखना है ताकि भारत राष्ट्र का एक पहचान बना रहे। और इसके वजह से सारे प्रोविजंस जो हम फेडरेशन में देखते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं को चिन्हित करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को जिस तरह से और भी नाम बताए गए, कोऑपरेटिव फेडरल, कंपैरेटिव फेडरल, एक और नाम बताया जाता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, जिसमें पावर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, पावर जो है अलग अलग दिए गए हैं। और हमें यह भी पता है कि जो बहुत सारे प्रोविजन जो संविधान में है वो 1950 से पहले जो चलते आ रहे थे वहां से लिए गए हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा
कि गवर्नेंस पहले जैसा चलता रहा था उसको कंटिन्यू रखने के लिए ही उन प्रोविजंस को लिया गया और गवर्नर का भी पावर कहीं ना कहीं उससे ही संलग्न है। तो हम जब गवर्नर का पावर देखते हैं तो हमें लगता है कि गवर्नर जो है वो दो रोल प्ले करता है। एक गवर्नर रोल प्ले करता है जिसमें वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और एक जो गवर्नर रोल प्ले करता है उसमें वो लेजिस्लेचर का, राज्य के लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो दो अलग अलग उसके रोल हैं और जब आप गवर्नर के रोल को देखेंगे तो 355, 356 जो है अनुच्छेद संविधान का, वो कहीं ना कहीं इस बात को बड़ा उल्लेख करता है कि संघ की जिम्मेवारी है, यूनियन हैज गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन that the country runs as per the constitution. So the responsibility is there with the central government. So if the responsibility is there with the central government, obviously all necessary power will be there with the central government. And that's how we see कि गवर्नर को 356 में अधिकार दिया गया कि गवर्नर जो है रिपोर्ट देगा जिसको ध्यान में रखते हुए जो है केंद्र जो है प्रेसिडेंट रूल लगाती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है प्रोविजन है वो जो गवर्नर जो ओथ लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो 3 ओथ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन टेक्स्ट में है, बाकी ओथ जो है शेड्यूल में है। और गवर्नर का ओथ 159 में जो दिया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नर ओथ लेते हैं, कहते हैं विल डू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओथ जो है सिमिलर ओथ है जो प्रेसिडेंट लेते हैं। तो गवर्नर का भी ओथ जो है डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रिजर्व करना है कॉन्स्टिट्यूशन का। और गवर्नर ये भी ओथ लेते हैं कि आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो कहीं ना कहीं गवर्नर का ये भी ओथ है कि वो जन कल्याण के लिए, उस राज्य के जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। तो जब हम दो रोल को देखते हैं गवर्नर का, एक जब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखते हैं, तो हम जब उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राज्य का कोई उसमें रोल नहीं है। और ये हमेशा से कहीं ना कहीं एक विवाद का मुद्दा रहा है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में राज्य का क्या रोल होना चाहिए। कमीशंस ने ये रिकमेंड किया है कि राज्य का भी रोल होना चाहिए, कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि जिसकी वजह से कौन गवर्नर बने उसमें राज्य का एक राज्य की बात जो है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाई जा सके। और हमें पता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल पावर की बात नहीं करते, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के कहने से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने से करता है। और इसी तरह से राज्य का कोई रोल रिमूवल में भी नहीं है, राज्य गवर्नर को रिमूव कराने में उसका कोई रोल नहीं है। और जब हम राज्य के रूप में गवर्नर को राज्य के रूप में देखते हैं, उसका हिस्सा देखते हैं, तो गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं अनुच्छेद 163 में। गवर्नर हैज गॉट ए पावर टू गिव असेंट टू द बिल वेयर बाय ही कैन टेक हिज ओन स्वीट टाइम फॉर गिविंग द असेंट। देयर इज नो टाइम फ्रेम गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गिविंग द बिल, गिविंग द असेंट टू द बिल। Also at the same time, Constitution does not provide any kind of guidelines to the governor that what he would do if he withholds the bill. Same is the case. Governor has got a power to refer the bill to the president. Governor के पास ये भी power है कि president को bill जो है refer कर सकती है। उसमें भी कोई time frame, कुछ guideline की बात नहीं की गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो विवाद को लेके आती हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नर जो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है कहीं पे। गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे चीजें करते हैं और जब गवर्नर डिस्क्रिप्शन पे चीजें करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नर जो है वो सेंटर का एजेंट के रूप में काम करते हैं, बिकॉज उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली सेंटर से हुई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो राज्य के भलाई के बजाय वो संघ की भलाई, यूनियन गवर्नमेंट की भलाई के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसके वजह से यह देखा गया है कि जब केंद्र में शासन बदलता है, एक पार्टी का शासन आता है, तो राज्य के राज्यपालों को भी बदला जाता है। हमेशा से यह होता रहा है। और जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक बड़ी अच्छी डिसीजन दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को आर्बिट्रेरली रिमूव नहीं करना चाहिए। उनका गवर्नर का 5 साल का टेन्योर है तो इसलिए उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्लेजर बेस्ड अपॉइंटमेंट है, उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है बिना कोई कारण बताए। लेकिन उसके साथ साथ 5 साल का समय दिया गया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल के केस में बड़ी अच्छी बात बोली कि उनको किसी आर्बिट्ररी ग्राउंड में रिमूव ना किया जाए। जब वैसा ग्राउंड हो जैसे वो कैपेसिटी उनकी ना हो, कोई मिसबिहेवियर हो, कोई मिसडेमेनर हो, तभी उनको हटाया जाए, नहीं तो 5 साल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर कोई गवर्नर समय से पहले हटाया जाता है तो गवर्नर को यह अधिकार है कि गवर्नर कोर्ट में जाके उसके डिसीजन के खिलाफ चैलेंज कर सकता है। उसी तरह से और एक अरुणाचल विधानसभा के केस में कोर्ट ने बोला कि डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर को दिया गया है उसको ऑब्जेक्टिवली एक्सरसाइज करना है, उसको सब्जेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि गवर्नर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही बैलेंस बनाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि गवर्नर जो है वो एक ऐसे पद पे है जिसको अपने पद की गरिमा बनाते हुए सेंटर स्टेट के रिलेशन को बैलेंस बना के चलना है, ना कि सेंटर का एक प्रवक्ता की तरफ बनना है। तो इन सब प्रोविजंस को देखते हुए जब हम देखेंगे कि क्या आगे का क्या परिकल्पना हो, गवर्नर के रोल की क्या परिकल्पना होनी चाहिए, क्या उसका विचार होना चाहिए, क्या सजेशन होना चाहिए, तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने की है कि जब गवर्नर के पोजीशन की बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोची गई, जब उस समय चल रहा था व्याख्यान कि किस तरह से गवर्नर के पोजीशन को किया जाए, नॉमिनेट किया जाए, अपॉइंट किया जाए, इलेक्ट किया जाए, तो इलेक्शन को इसलिए हटा दिया गया कि ये नहीं सोचा गया कि अगर राज्य में 2 इलेक्टेड बॉडीज होंगे, चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड होंगे और गवर्नर भी इलेक्टेड होंगे, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए अपॉइंटमेंट का प्रोसेस किया गया। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर हम अभी किसी तरह का सुझाव दें गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, तो हमें 1947 और 50 में देखना पड़ेगा कि क्या वो परिस्थिति अभी बदल गई है, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी कि देश को एक करके रखना था। तो अभी क्या वो परिस्थिति बदल गई है और उसके वजह से क्या गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज करने की आवश्यकता है? क्या अब हम होल्डिंग टुगेदर के बजाय कमिंग टुगेदर में आ गए हैं? क्या राज्य अपने स्वेच्छा से जो है इकट्ठे रह रहे हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं सेंटर की अथॉरिटी की जरूरत है? इन सब बैकग्राउंड के तहत ही हम जो है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। और जहां तक प्लेजर डॉक्ट्रिन की बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि गवर्नर का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना। अगर केंद्र सरकार को यह लगे कि किसी समय जो गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड नहीं कर रहा है, तो केंद्र सरकार के पास अधिकार होना चाहिए गवर्नर को हटाने का। तो इसलिए ये प्लेजर डॉक्ट्रिन अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जहां तक ये सुझाव दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर का रोल होना चाहिए गवर्नर के सिलेक्शन में, मेरा अपना मानना है कि चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जो है एक इम्पार्शियल गवर्नर जो है, जिस तरह की उसकी भूमिका तय की गई है संविधान में, उसमें गवर्नर को एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना है। अगर चीफ मिनिस्टर की भूमिका देंगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पार्शियलिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और फिर चीफ मिनिस्टर की कैसी भूमिका हम सोचते हैं, कंसल्टेटिव होनी चाहिए या कंकरेंस होनी चाहिए? चीफ मिनिस्टर केवल सुझाव देंगे या वो जो सुझाव देंगे वो बाध्य होगा? हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के मैटर में किस तरह से कंसल्टेशन का इंटरप्रिटेशन हुआ है और किस तरह से अभी ये कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस अच्छा है। हाँ, ये जरूर होना चाहिए गवर्नर के रिमूवल में राज्य का से होना चाहिए। एक ऐसी प्रावधान करनी चाहिए कि अगर गवर्नर जो है राज्य के हित में काम नहीं कर रहा है, तो ये जरूर होना चाहिए कि राज्य के विधानसभा पटल पे एक रिजोल्यूशन आना चाहिए, और रिजोल्यूशन अगर गवर्नर के खिलाफ गया तो रिजोल्यूशन प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए और प्रेसिडेंट को उसको कंसिडरेशन करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ये सुझाव जरूर होना चाहिए ताकि राज्य का से हो गवर्नर के फंक्शनिंग में और गवर्नर के बने रहने में। और जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टाइम बाउंड फ्रेम बनना चाहिए जिसमें गवर्नर को यह बताया जाए कि आप कितने समय तक बिल को एसेंट करेंगे या विथहोल्ड करेंगे, तो कितने समय तक करेंगे, अगर प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं। और अभी चूंकि सूचना का इतना कुछ हो गया है, टेक्नोलॉजी ने इतना रोल प्ले कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो ये मस्ट होना चाहिए कि किस कारण से गवर्नर ने एसेंट को नहीं दे रहे हैं, क्यों विथहेल्ड कर रहे हैं, ये सारी चीजें पब्लिक में आनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ पाए। तो मैं 2-3 चीजों को कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि व्हेन वी लुक एट द रोल ऑफ गवर्नर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in connecting the connection between the center and the state. कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन की जो ड्राइव है, नेशनल इंटीग्रिटी की जो ड्राइव है, जिसके वजह से गवर्नर के ऑफिस को बनाया गया, वो अभी भी उतना ही जो है उपयोगिता है उसकी अभी भी उतनी ही रेलिवेंसी है। तो गवर्नर कनेक्ट करते हैं,
गवर्नर कांटेक्ट करते हैं, संपर्क संघ से बना के रखते हैं, क्योंकि संघ की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि राष्ट्र जो है पूरा संविधान के अनुसार चले 355 में, क्योंकि किसी ना किसी को तो जिम्मेवारी देनी है, राज्य को नहीं दे सकते हैं, इसलिए संविधान में केंद्र को जिम्मेवारी दी गई है। उसके लिए गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है राज्य और संघ के बीच में, जो इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो। और जिस तरह से ओथ लेते हैं गवर्नर, जो उनकी ओथ है वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी उनका मेंटेन करने का दायित्व है। तो इसलिए नेशनलाइजेशन गवर्नर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, डिसेंट्रलाइजेशन उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, क्योंकि वो ओथ लेते हैं लोग जनहित में काम करने के लिए, और नेशनल इंटीग्रेशन भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। और जब हम ये बात करते हैं कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है और ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता है, तो हमें इस बात का भी और ध्यान रखना होगा कि उसके अलावा और भी संस्थाएं हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें प्रेसिडेंट ही केवल रोल प्ले करता है, और वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन सेंटर अपॉइंट करता है, वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को गवर्न करता है। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी सेंट्रल अपॉइंट करता है, उसमें भी कुछ नहीं होती। अगर गवर्नर को भी सेंटर अपॉइंट कर रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जरूरत क्या चीज की है? स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की। गवर्नर को 5 साल रहने देना चाहिए ताकि गवर्नर को इंडिपेंडेंस हो, गवर्नर की ऑटोनॉमी हो। और क्या जरूरत है? गवर्नर को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। अकाउंटेबल बनाने का एक तरीका यह हो सकता है कि जब गवर्नर अगर राज्य हित में काम नहीं कर रहा है तो ये संविधान में संशोधन करके या किसी तरीके से रिजोल्यूशन पास हो, रिजोल्यूशन की एक वैल्यू हो जो प्रेसिडेंट बाउंड हो कंसीडर करने के लिए, स्पीकिंग रिजोल्यूशन हो, ताकि गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी भी तय हो सके। स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये बहुत जरूरी है ताकि गवर्नर अपना रोल सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बनाने के लिए मजबूती से कर सके। धन्यवाद। Thank you very much, sir. If anyone has a question, kindly raise your hand. I think, sir, सब पूछ रहा है. Please give the mic. Sir is asking. आप भी पूछिए सर, पूछिए. Sir, we'll come back to you. मैं मिथिलेश मिश्र, झारखंड विधानसभा से। बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ एक चीज सर जानना चाहता हूं कि गवर्नर के रोल की बात की गई, उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, एसेंट ऑफ बिल की बात की गई। एक चीज शायद छूट रहा है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग जो होता रहा है, खासकर 1977 में, 1980 में जो हुआ, हाल के समय में हमने उत्तराखंड वगैरह में देखा, कोर्ट का इंटरफेरेंस देखा और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देखा गया। लेकिन 77 और 80 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर किया जाए। सर, उसका ही ये मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि वो जो पहले से होता रहा है, जैसे सरकारें बदलती रही हैं और गवर्नर के ऑफिस को इस्तेमाल किया गया स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो अगर स्टेबिलिटी देंगे, जो बीपी सिंघल केस में कोर्ट ने बोला है कि उनके 5 साल का टर्म जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, वो केवल तभी उनको हटाया जाना चाहिए जब वो स्पेसिफिक कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हो। तो जब गवर्नर को यह निश्चितता लगेगी कि उनकी 5 साल का टेन्योर जो है कंफर्म्ड है, एश्योर्ड है, तो वो सेंटर को मना करना शुरू कर देंगे। अभी स्थिति क्या होती है कि गवर्नर को यह प्रतीत होता है कि उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो है वो वहां से है और उनको हटाने का हक है, जो अभी भी टेक्निकली है। लेकिन जैसे ही इसमें एक और सुझाव मेरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट रिव्यू कर सकती है अगर गलत तरीके से गवर्नर को हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? जिसको हटाया गया है। अब ये गवर्नर के लिए, जो गवर्नर बना है, जो राज्यपाल बने हैं, उनके गरिमा के खिलाफ है कि वो कोर्ट में जाएंगे कि उनको हटा दिया गया। इसीलिए करना क्या चाहिए कि किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को अलाउ करना चाहिए कोर्ट में जाने को, क्योंकि राज्यपाल जो बन गए हैं उनके गरिमा के खिलाफ है, वो कभी कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने बड़ी अच्छी जजमेंट दी, लेकिन कोर्ट ने राइडर लगा दिया कि जो जिसको हटाया गया केवल उसकी लोकस स्टैंड ही है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर उसको भी हम ओपन कर दें तो आई एम वेरी श्योर कि गवर्नर को हटाने से पहले 4 बार जो है केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। हेलो, एक सवाल मेरा है कि आपने कहा है कि गवर्नर को हटाने के लिए विधानसभा से, तो जिस तरह से जजेज को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की परंपरा है और संसद के 2/3 बहुमत से उसको हटाया जाता है, क्या उस तरह की परंपरा विधानसभा में बनाई जा सकती है? कि मैं थोड़ा सर उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह का पावर जुडिशरी के पास है उस तरह का पावर कहीं ना कहीं गवर्नर के पास नहीं है। तो गवर्नर के पास उस तरह के पावर नहीं होने की वजह से अगर हम उस तरह का अधिकार विधानसभा को दे देंगे
तो उसका हो सकता है दुरुपयोग हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नर हमेशा थ्रेट में वर्क करेगा। तो मैं क्या सुझाव दे रहा हूं कि विधानसभा प्रस्ताव पारित करे और वो प्रेसिडेंट को भेजे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नर का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करना भी है, क्योंकि 355 में लिखा है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तय हो कि पूरा देश संविधान के हिसाब से चले। तो सेंटर कैसे इसको सुनिश्चित करेगा? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो गवर्नर को अगर हम कठपुतली बना देंगे विधानसभा का तो वो भी उचित नहीं है। Thank you, sir. Thank you very much. I know Hello. that this topic invites many Sir, questions, sure. but let me inform all of you Sir. that the speech that is given also in writing, and Sir. the Sir. resource person's contribution will be coming in the shape of a small book which contains the telephone number as well as the email ID of the resource person. Those of you that want to ask a question, Sir. you can straight away contact them either by calling them or by writing to them via email. Thank you very much. Now, धन्यवाद सर। जरा माइक लीजिए सर। माइक दे दीजिए। जो बोल रहे थे, मेरा परिचय है, मेरा नाम अवध बिहारी सिंह है। यूनाइटेड बिहार असेंबली में मेंबर हुआ करता था और मिनिस्टर भी था। वो जो बोल रहे थे उनका परिचय जरा बता दीजिए। मैं सर उदय शंकर हूँ, मैं प्राध्यापक हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में। मुझे लगा कि स्पेशलिस्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरा मूल मंत्र है, वही हमारा जान है, प्राण जिसको बोलते हैं। सभी गवर्नर का जिक्र किया आपने, एसआर बम्बई का केस आपने जिक्र नहीं किया। एसआर बम्बई को डिसमिस करा दिए थे, हमको डॉक्टर मना करता है बोलने के लिए, छाती मेरा दर्द करने लगता है। बैठ के अगर इफ यू अलाउ मी टू एसआर बम्बई हमारे ही नेता कांग्रेस को डिसमिस कर दिए थे, कर्नाटक का था। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व किया कि 356 इट शुड बी पास बाय द पार्लियामेंट। हम क्या करते थे, पार्लियामेंट से पास करते थे, राज्यसभा नहीं जाते थे। और इसी तरह कश्मीर में मैं राज चलाता रहा शेख अब्दुल्ला के थ्रू, आपने देखा होगा। नहीं हमको बोलने दीजिए। शेख अब्दुल्ला के थ्रू। और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लेम नहीं कीजिए, वो सब पावरफुल आदमी जजेस बनते हैं, उनका रिस्पेक्ट रहता है। सुप्रीम कोर्ट कभी गलत नहीं करता। मेरे साथी कहते हैं कि जज आजकल चेहरा देख के फैसला करता है, तो जज ऑब्जर्व करता है कि क्रिमिनल है कि नहीं है, तो जिसको उसको लगता है कि क्रिमिनल नहीं तो उसको छोड़ देता है, उसको नहीं जाएंगे। तो एसआर बम्बई गए, जो हारेगा वही नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नर इज ऑल्सो ए पार्टी ऑफ दैट केस, तो ही शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मेरा सुप्रीम न्यायालय है, हम भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी हटते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एसआर बम्बई केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया व्हाट इज द पार्लियामेंट, हु इज द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट, लोकसभा इज अलोन इज नॉट ए पार्लियामेंट। राज्यसभा इंक्लूड, पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा इज नॉट ए पार्लियामेंट। तो बिल सूट 356 में हम खाली लोकसभा में पास करते थे, राज्यसभा नहीं ले जाते थे, क्योंकि वो हमारा था, हम राज चलाते थे, हम अपने मन से चलाते थे, तो नहीं ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उद्घाटने के बाद ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट एसआर बम्बई केस में, और कहा कि नहीं साहब, आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो तो मान है। दो ही आदमी को कानून बनाने का फैसला है, पकड़िए जरा सो, दो ही आदमी को कानून बनाने का फैसला है, एक सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ए पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पावर है कि वो शाहबानू केस में यू हैव सीन, वो अथी वाला कंपनसेशन देने वाले में, तो वो फिर राजीव गांधी बेचारे नए आदमी थे, उन्होंने क्या कहा, वो चले गए फिर। Sir, thank you very much, sir, for enlightening us with your exposure in the last few years. You're a great leader. Thank you very much, sir. We will take it up when it is necessary. Next speaker, may I request Professor Dr. Anurag Deep. Sir, please come.
Sir, he is a professor in Indian Law Institute, New Delhi. He was a member of Academic Council and Executive Committee of Indian Law Institute and many other universities. He has many publications to his credit, and he will be speaking on the topic Center-States Relations, its impact on good governance. Sir, we'll be very much delighted if you take as short a time as possible. सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विराजमान विधानमंडल के अन्य माननीय सदस्य, आदरणीय कुलपति महोदय, प्रोफेसर लक्ष्मीनाथ सर, समकक्ष बैठे विद्वान अध्यापक, अन्य गणमान्य व्यक्ति और प्रिय मित्रों, मेरा विषय है परिसंघवाद और सुशासन, और एक पीपीटी बनाकर लाने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे अगले चेंज हो जाएगा, ये कौन सा आप कर रहे हैं चेंज? अगली पीपीटी पे जा सकते हैं हम? यस, थैंक यू। 4 पॉइंटर्स हैं। परिसंघवाद क्या है हम सब जानते हैं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सुशासन का क्या अर्थ है, संविधान की स्पिरिट इस संबंध में क्या है, और आगे का रास्ता हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए प्लीज। क्योंकि ये जो शब्द है गुड गवर्नेंस, ये बहुत ही वेग शब्द है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए कोई ऐसी परिभाषा लाने का, ढूंढने का प्रयास किया जाए जो कि किसी अथॉरिटी से हो। यूनाइटेड नेशन के एक डॉक्यूमेंट में गुड गवर्नेंस की परिभाषा बताई गई है, और वो बताया गया है कि इट इज ए प्रोसेस एंड प्रैक्टिस थ्रू विच इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न आर डिसाइडेड अपॉन एंड रेगुलेटेड, एंड गुड गवर्नेंस इज ए नॉर्मेटिव और इवेल्युएटिव एट्रीब्यूट। गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, इसका एक नॉर्म है, ये एक नॉर्म क्रिएटिंग बात है गुड गवर्नेंस। सो इट हैज ए ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव आल्सो, एंड three important points are there, that how public institutions are conducting their public affairs, number 1. Number 2, how they are managing their public resources, and third, what is the guarantee of realization of human rights. अगली स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। So good governance is political and institutional process and outcomes that are necessary to achieve the goals of development. What is the test of good governance? Test of good governance is whether promise of human rights are fulfilled or not. Civil liberties, cultural rights, economic, political and social rights. If we see our constitution, our civil rights are given under part 3rd of the constitution. भाग 3 में सिविल राइट्स हमारे दिए गए हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स भी भाग 3 में दिए गए हैं, इकोनॉमिक राइट्स भाग 4 में है, कल्चरल राइट्स भी भाग 3 में दिए हुए हैं। तो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। हमारा एक संविधान फेडरल संविधान है, लेकिन इसमें व्यवस्था की गई है। जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है हमारा, वह फेडरल है, लेकिन जैसा कि पहले के वक्ता ने सही कहा कि केवल 2 लेवल नहीं है, एक और लेवल है जो पंचायती राज का लेवल है। 3 लेवल हमारे पास है हमारे संविधान में। इनकी पॉलिसी कैसी होगी, इनका प्रोग्राम्स क्या होंगे, बजटरी एलोकेशन कैसे होंगे, ये जो बातें इन चीजों को आगे बढ़ाती हैं, वे सभी बातें गुड गवर्नेंस से जुड़ी हुई हैं। अगली स्लाइड प्लीज। 4 एरियाज रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस को लेकर। पहला है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से काम करते हैं? पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग आइदर थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मल कंसल्टेशंस। अपने कंट्री में देखें हम तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नीति आयोग है, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, जीएसटी की भी चर्चा हो रही थी, जीएसटी काउंसिल की चर्चा हो रही थी, इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा हो रही थी। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है जो पार्टिसिपेटरी रोल पैदा करते हैं। दूसरी ओर क्या इनफॉर्मल कंसल्टेशंस है, फेडरल स्तर पर या तो स्टेट में देखें या सेंटर में देखें, तो इनफॉर्मल कंसल्टेशन भी हमारे कंट्री में हो रहा है।
सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू जनता से बात करने का प्रयास करते हैं। अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूनाइटेड नेशन ने जो दूसरी बात कही है, पहला मैंने आपसे निवेदन किया कि पहला कहा है, पहला एरिया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, गुड गवर्नेंस को लेकर। दूसरा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। गुड गवर्नेंस का दूसरा टेस्ट है कि किस प्रकार की पब्लिक सर्विस हम दे रहे हैं। टू इंप्रूव स्टेट कैपेसिटी टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, राइट टू एजुकेशन। तीन जो जरूरी बातें उन्होंने कही है, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, ये तीन बातें कही है जो गुड गवर्नेंस का एक पैरामीटर हो सकता है। राइट टू एजुकेशन की दृष्टि से हम देखें तो सेंट्रल पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन को लेकर अमेंडमेंट भी किया है और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना दिया है और वो सारे देश में लागू हो रहा है, राज्यों को वो लागू करना है। हेल्थ को हम देखें तो हेल्थ स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा, पिछले कुछ सालों में देश के भिन्न भिन्न जगहों पर केंद्र सरकार अपने फंड से, राज्य के सहयोग से कई स्थानों पर एम्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़ी चीजों का को जोड़ दे रही है। विशेष रूप से कोविड का जो हमारा एक्सपीरियंस है ये बहुत पुअर रहा है। आपकी जानकारी में होगा शायद कि जब हेल्थ को स्टेट लिस्ट में डाले जाने की बात हो रही थी तो संविधान सभा में चर्चा हुई थी कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट में ना डाला जाए, इसको कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में डाला जाए। बाद में यह फील हुआ खास करके कोविड के दौरान कि शायद हमसे एक बड़ी गलती हुई और बाद में फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंड भी किया है कि हेल्थ को हमें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि केंद्र कभी यह नहीं कह सकता कि हमारा विषय नहीं है, हमारा इसमें कोई हम इसके लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, राज्य जिनके पास रिसोर्सेज कम है वो केंद्र से हक के साथ चीजों को मांग कर सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस की दिशा में अगर अगला कदम होगा तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सेंट्रलाइजेशन जरूर होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हेल्थ है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए, जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया है। फूड को देखें तो फूड कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लॉ बनाया है, स्टेट्स को उनको पास करना है। अगली स्लाइड पे है प्लीज। तीसरा जो पॉइंटर है जो यूनाइटेड नेशन ने बताया गुड गवर्नेंस के लिए, वो बताया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो एक इसेंशियल पैरामीटर है कहीं गुड गवर्नेंस है या नहीं है। इसमें जो बातें कही गई है वो लेजिस्लेशन का रिफॉर्म्स है। जिस कंट्री में गुड गवर्नेंस है वहां क्या लेजिस्लेशन को लेकर कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि नहीं। हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत सारे पुराने लॉज जो है हम रिपील कर रहे हैं, वो राज्य के स्तर पर भी है, वो केंद्र के स्तर पर भी है, वो कई लॉज जो है रिपील का लॉ जो है अंडर प्रोसेस है। दूसरा यूनाइटेड नेशन का डायरेक्शन है रूल ऑफ लॉ में कि क्या आपस में हम पेनल सिस्टम को लेकर असिस्ट करते हैं कि नहीं, राज्य और केंद्र आपस में पेनल सिस्टम को लेकर असिस्ट करते हैं कि नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है। इसके बाद भी जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि चूंकि आर्टिकल 355 में यूनियन की ड्यूटी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट की रक्षा करे, इसलिए वो स्पेशल लॉज बनाते हैं। डिफेंस जो है वो भी यूनियन लिस्ट का विषय है। तो हमारे पास सेंट्रल पेनल लॉज है, इंडियन पेनल कोड है, स्टेट के भी लॉज है, लेकिन इसके साथ साथ स्पेशल लॉज भी है, जैसे यूएपीए हो गए, एनआईए है। तो ये जो लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, इनका उपयोग सेंटर भी करती है और स्टेट्स भी करती है। निश्चित रूप से इन कानूनों का उपयोग होता है, पर इन कानूनों का उपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर भी होता है। हमारे पास इंपावरिंग लॉज भी है जो कि इंपावर करते हैं और जैसे और अलग से शक्ति प्रदान करती हैं। अलग एजेंसी भी बनी है, जैसे एनआईए है, जो कि जो मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं उसके मामलों में बिना किसी जुरिस्डिक्शन के एनआईए हस्तक्षेप कर सकती है। करप्शन के मामलों में सीबीआई है, और सीबीआई की जो स्थिति है वो ये है कि वो राज्यों में हस्तक्षेप तब कर सकती है जब उसके पास कंसेंट हुआ हो। मैं अगली पीपीटी में उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। रिफॉर्म को लेकर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि गुड गवर्नेंस के लिए reforms in courts are also essential. Are both the parties, both the units, that is center and states, are they both participating in reforming courts or not? Unfortunately, reforms की दृष्टि से जो राज्य हैं वो थोड़ा पिछड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में राज्यों में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो जिला के न्यायालय हैं, वहां वैकेंसीज खाली हैं और कई जगहों पर ये स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं भर पा रही है। आपको ध्यान होगा गोगोई साहब के समय में
गोगोई जी ने अपने हाथ में ये लिया था और तब जाकर बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़ी संख्या में पोस्ट भरी गई थी। तो राज्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कोर्ट्स में जो रिफॉर्म होने हैं वो उनके हाथ में है, उसके लिए उनको सेंटर की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगली स्लाइड पे आएंगे। आखिरी जो पॉइंटर है वो एंटी करप्शन का है। आपको ध्यान होगा 4 पॉइंटर जो यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस के लिए बताए हैं। पहला है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसा है, उसमें पार्टिसिपेशन आपस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है कि पब्लिक सर्विस की डिलीवरी कैसी हो रही है। तीसरा है कि रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन है, और चौथा है एंटी करप्शन। ये इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य की अपनी अथॉरिटी है जो करप्शन से डील करती है, केंद्र की अपनी अथॉरिटी है जो करप्शन से डील करती है। करप्शन एक ऐसी कीमत की तरह है जो हमारी हर चीज को अंडू कर देता है। आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था करिए, बढ़िया से बढ़िया फाइनेंस की व्यवस्था करिए, और अच्छे से अच्छे लोगों को प्रधानमंत्री और आप चीफ मिनिस्टर बनाइए। अगर करप्शन है तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए करप्शन की दृष्टि से राज्य और सेंटर दोनों एजेंसी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। सीबीआई, जिसकी बात मैं पिछले दौरान भी कर रहा था, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और कानून ये कहता है कि सीबीआई के पास 2 तरह की कंसेंट होती है। एक जनरल कंसेंट होती है, एक स्पेशल कंसेंट होती है। जनरल कंसेंट का मतलब है कि सीबीआई बिना जनरल कंसेंट के, राज्यों की अनुमति के बिना करप्शन के मामलों में राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पेशल कंसेंट का मतलब है उस खास मामले में वो राज्य से कंसेंट लेगी। इस मामलों में हम लोग देखा है कि केंद्र और राज्य में थोड़ा विवाद चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस विवाद को जितनी जल्दी सुलझाया जाएगा वही इस देश के हित में है। मैं इस बात से 3 मिनट जी, थैंक यू सर। मैं सहमत हूं कि इन एजेंसीज का दुरुपयोग होता है। हर तरह की सरकारें इन एजेंसीज का दुरुपयोग करती हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे मामलों में जहां भी राज्य सरकार को यह लगता है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट से वो अपेक्षा कर सकती है या हाई कोर्ट से अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे सभी मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करे, केंद्र सरकार वो ना करे। तो इससे जो एक डर बना हुआ है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करती है, वो दुरुपयोग का डर दूर हो जाएगा। इस 4 पॉइंटर के बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अगर डिस्क्रिप्शन को हम देखें, मैंने बताया कि इसके पहले यूनाइटेड नेशंस की एक डिस्क्रिप्शन थी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल 5 बिंदु बताती है इसमें। एक है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है गुड गवर्नेंस को लेकर। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी कितनी है। चौथा है पार्टिसिपेशन कितना है, और पांचवा है रिस्पॉन्सिवनेस कितना है। मैं अपनी बात को इस बात से खत्म करूंगा कि फेडरल सिस्टम में राज्य और केंद्र 2 अलग अलग यूनिट है। और जैसा कि कई लोगों ने बताया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, वहां पे केंद्र जो है वो शक्तिशाली होता है, केंद्र बलशाली होता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र जो है मनमानापन करे। 356 के मुद्दे को लेकर जो मनमानापन हुआ, जो अन्याय हुआ राज्यों के साथ, उसके हम लोगों ने देखा है। पर खुशी की बात है कि 90 के दशक में बम्बई के निर्णय के आने के बाद गुड गवर्नेंस का एक जो बहुत बड़ा जो एक रोड़ा था 356 का लगा दिया जाना, जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में था, जो वन ऑफ द पॉइंटर्स है यूनाइटेड नेशन का, हुआ, उस पर काफी कुछ रोक लग गई है। तो मैं अपनी बात के समापन इस बात से करूंगा कि गुड गवर्नेंस के लिए जो है छोटा सा एक फॉर्मूला हो सकता है। वो फॉर्मूला जिसको हम टी कहते हैं, TEAT। टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ई फॉर इफेक्टिवनेस, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों ऐसे मामले हैं जिसके लिए राज्यों को केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजी के दौर में ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस वो शो कर सकते हैं, और इस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। If anyone Sir, I have the greatest privilege in welcoming the Advocate General of the state of Jharkhand, Sri Rajiv Ranjan ji. Sir, we are honored by your presence here. And let me also take this opportunity to welcome the resource person who is joining us just now, Professor Yogesh Pratap Singh ji. And the question, please. anyone has any question? Good morning, sir. My name is Bandesh Kumar from Chota Nagpur Law College. My question is, sir, right to education mandatory करता है कि ये 14 years age मैंडेटरी एजुकेशन के लिए आर्टिकल 21A पे किया गया है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज का गुड गवर्नेंस जो हम लोग सोच रहे हैं या कह रहे हैं, इस एज को बढ़ाना चाहिए आगे के लिए। और हमको जहां तक लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि ये गुड गवर्नेंस को
थोड़ा डाउनफॉल की ओर ले जा रहा है, जो 14 इयर्स एज फिक्स्ड किया गया है। मेरा कहना है कि इसको आगे ले जाने से गुड गवर्नेंस ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समाज के लिए दे सकते हैं। तो ये कहाँ तक सही है मेरा मानना, आप इस विषय पे जरा 1-2 लाइन कहें तो। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये दिक्कत आ रही है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करने का अधिकार है और उनको मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। पर जैसे ही 15-16 साल के होते हैं, उनके ऊपर, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके ऊपर एक पहाड़ जैसा टूट पड़ता है, क्योंकि उनको वो शिक्षा मुफ्त पाने का अधिकार नहीं है। सरकार की व्यवस्था है पर वो अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो एज है, इस एज को चेंज करना चाहिए। लेकिन सरकार की दिक्कत ये है विषय की, सरकार के पास फाइनेंस कम है, उसके पास लिमिटेड फाइनेंस है। अभी वो 14 साल तक के बच्चों को ही पूरी शिक्षा ठीक तरीके से नहीं दे पा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के पास, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको अपने कानून में संशोधन करके इस जो एज है उस एज को बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। कोई और प्रश्न तो? Many hands are going up. I'm very happy that you are not feeling hungry. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर, मैं गुड गवर्नेंस में हेल्थ का जो योगदान आपने उसके प्रमोशन के लिए बात की, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ सर कि मेंटल हेल्थ पे इंटर स्टेट सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है, इस पे मेरे हिसाब से बहुत कम कम्युनिकेशन है। जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूं सर, तो यहाँ DMHP प्रोग्राम चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दुमका, गुमला, जमशेदपुर एंड पलामू, दुमका। तो देन सर ये बहुत कम नहीं है। और आफ्टर कोविड, Will you please identify yourself? सर मैं CNLC। Will you please raise your hand? Where, madam? Will you please rise for a while? सर मैं CNC। Yeah, please. First of all, you please learn how to frame a question. Asking a question is not an opportunity to share the information. Yes, sir. This is not a question concerning good governance. Yes, sir. Please ask him on the topic on which he spoke. Thank you very much. If you have any other question during lunchtime, you please come and ask. I'll point out the right resource person to whom you can approach. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah, please go ahead. Here. Good afternoon, sir. It's Saman Upadhyay, second year student at NUSRL Ranchi. Sir, what I believe that coordination between state and center is most important thing for good governance. But in recent years, as we can see, there are lots of controversial bill has been passed. Either it is NCT bill or controversial bills related to farm, agriculture and health sector. So in these bills, we can see that somehow center has overpowering its power and misusing it. Then what are your suggestions regarding this, and what could be the reasons of this issue? Mr. I don't know, you are second year student. Whatever I told her equally applies to everybody in this hall. Please ask a question. हम सोचते हैं, ये हम मानते हैं, I believe this, I believe that. This is not the opportunity or platform for you to express what are your feelings. This is to ask a simple, straightforward question on a topic. Yeah, please, what is your question? I have not understood your question. You are going to become a good lawyer. A good lawyer is one who makes other fellow confused. Yes, sir. Thanks for the suggestions. My question is, how could be coordination, which is lacking nowadays, could be achieved, and what are the reasons of this But as I lack of understand, coordination? I am supplementing him. He is asking just how the state and central relations could be coordinated so that there will be good governance. That's a simple Yes. I think this needs two type of theories to be followed. Number one, states must understand that though there is a federal polity, for the purpose of national interest, it is the center that has the greater say. Sometimes it happens that the states do not understand this particular thing. Let me give you a small illustration. It was a case of the creation of National Counter-Terror Center. It was a matter of sovereignty, but many states had objection on this. This was a matter of sovereignty, integrity, and national security. States must understand. Second theory is the center should understand
that states are not their appendages. States are not their subordinate. States have been given sovereign power within constitutional jurisdiction. So in the light of that, states should be consulted, a dialogue should be there, and the states should not make laws in a fashion as if there is a monopoly on making laws just because they have jurisdiction either under union list or under state list. So the answer is that the greater and greater dialogue can reduce these chances of conflict and confrontation. Thank you very much. Well, I'm sure you are reserving your questions for the post-lunch session also. With only one request I have to make to all of you, please enjoy the lunch, but not enjoy to such an extent that you will be feeling sleepy in the afternoon. So let us all have a business lunch. Complete the lunch. I'm sure you won't be requiring more than 20 minutes for completing the lunch. 5 minutes for going to the place of lunch. Have 20 minutes and come back. Now my time shows it is 1:44. So we are going to assemble at 2:15. Thank you very much. Let's all have a good, sumptuous business lunch. धन्यवाद सर। तकनीकी सत्र पहले तकनीकी सत्र की अब हम समापना की घोषणा करते हैं। मैं निवेदन करती हूं माननीय सदस्यगण, रिसोर्स पर्सन, एक्स एमएलएज और वरीय पदाधिकारीगण कृपया लंच के लिए सेंटर हॉल की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं स्कॉट करने के लिए निवेदन करती हूं श्री हरेंद्र कुमार सर से, श्री अनूप कुमार सर से और श्री वीरेंद्र कुमार सर से। सर आप इन्हें स्कॉट करेंगे। माननीय सदस्यगण, रिसोर्स पर्सन, एक्स एमएलएज और वरीय पदाधिकारीगण को सेंटर हॉल के लिए स्कॉट करेंगे प्लीज। और बाकी सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और सम्मानित अतिथिगण हैं, सभी कैंटीन के सामने जो टी लॉन्ज है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे लंच के लिए। 15 मिनट का समय है लंच का और ठीक 15 मिनट के लंच के बाद हम सभी टेक्निकल सेशन 2 के लिए यहां पर पुनः एकत्रित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। झारखंड विधानसभा 23 नवंबर 2022 को पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एवं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के सहयोग से केंद्र एवं राज्य संबंधों पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने वाला है। इस सम्मेलन में देश भर से संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ जो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिसर्च, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं अन्य लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपति और अन्य एकेडमिशियंस आने वाले हैं। अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के छात्र आपको इन विशेषज्ञों और उनके विषयों से साझा करवाएंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला विषय है संघवाद पर न्यायपालिका। प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप उके, कुलपति, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा विषय है केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर, केंद्र और राज्य सरकार के विधायी शक्तियों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति को समझाकर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरा विषय है केंद्र राज्य संबंध एवं सुशासन पर इसके प्रभाव। डॉक्टर अनुराग दीप, कानून के प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान दिल्ली, अच्छी सरकार प्रदान करने में सहकारी केंद्र राज्य संबंध के महत्व पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का चौथा विषय है भारत में राजकोषीय संघवाद। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के प्रोफेसर एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ए लक्ष्मीनाथ इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।
राष्ट्रीय सम्मेलन का 5वां विषय है भारत में राजकोषीय संघवाद और प्रशासनिक संघवाद के साथ साथ अंतर्राज्यीय परिषदों का कामकाज। डॉक्टर नीरज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, भारत में एक स्वस्थ राजकोषीय एवं प्रशासनिक संघवाद के विकास में अंतर्राज्यीय परिषदों की भूमिका के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां विषय, भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका एवं कार्य। प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर, जो वर्तमान काल में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है एवं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IIT खड़गपुर में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, आज के संदर्भ में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का 7वां विषय है संघीय ढांचे में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका। डॉक्टर S शिव कुमार, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के प्रोफेसर, संघीय ढांचे में केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज और उसके चुनौतियों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। राष्ट्र सम्मेलन का 8वां विषय है अखिल भारतीय सेवा और केंद्र राज्य संबंध। डॉक्टर के श्यामला, एसोसिएट प्रोफेसर, डायरेक्टर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची। राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां